धन्यवाद ताई। परम पूज्य गुरुजी इनके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से जो गर्भ संस्कार का अभ्यास दिया जाता है उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्रात्यक्षिक हमने देखा। बहुत ही सुंदर था और बहुत ही हृदय को स्पर्श कर गया ये अनुभव। यहाँ आकर जिन्होंने अनुभव कथन हमारे सभी को बताया और कुटीर की ओर से हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। सीमा ताई को मैं विनंती करती हूँ कि वो मृणाल भोड़े जी उनको पुष्प देकर सत्कार करें। डॉक्टर नेहा सैनी, और क्षमा ठाकुर। इन्होंने यहाँ आकर अपने अनुभव सब के साथ शेयर किए, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा अभ्यास जिन ताई इनसे सबसे करके लिया, जिन्होंने बहुत मनोबल और आत्मविश्वास इनको दिया, ऐसे वारके ताई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सीमा ताई को नम्र निवेदन करती हूँ कि सरोज वारके ताई का सत्कार करें। धन्यवाद वारके ताई, धन्यवाद सीमा ताई। अभी हमने सवेरे से लेकर अभी तक 4 विषयों पर चर्चा मार्गदर्शन का लाभ उठाया। इस सत्र का समापन करने के लिए सत्र के अध्यक्षा सीमा वैद्य इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। Hari Om. I hope this session was inspiring, interesting, and helpful to you all. Dr. Sanjay Bhaviskar explained the functioning of each and every organ of the reproductive system. He emphasized on he said prevention is always better than cure. Most of the disorders are due to wrong lifestyle, ahar, vihar, achar, vichar, and yoga practices can help in gaining back good health. Or his message is, Hamesha khush raho. And he has also mentioned some techniques of mind relaxation for staying happy. Mrs. Sadhana Patil presented the case studies of PCOD, thyroid, obesity, low AMH count, and endometriosis, due to which they had a difficulty in conceiving. You have seen prolonged yogic practices got them the desired result, and they were very happy. She also showed demonstration of certain kriyas and asanas for all these disorders. That was very nice indeed and very, very impressive. Dr. Prasad Kulkarni explained the development of fetus in every trimester. That was interesting to know, wasn't it, to all of you? And he also emphasized on
the changes that take place during pregnancy. And by taking proper care of the fetus, how to take care of the fetus, ensuring good health and of the fetus and mother during pregnancy. He also mentioned some asanas for easy and normal delivery. His message, you are not a sick person. So stay healthy, stay happy. Never think, any pregnant woman should not think that she is a sick person. Now, sometimes I feel all these doctors should have got more time for explaining. But of course, there is always time limitations for them. Mrs. Saroj Warke presented a few cases of pregnancy. She specifically emphasized that Kapal Bhati should be given even during pregnancy, but in modified form, which our Param Puja Guruji has said. She had a difficult task on her shoulders, as a lady was infected by coronavirus twice during pregnancy, and she was definitely successful. Dr. Mrunal, Dr. Neha Saini shared their experiences. Fantastic. All of you were fantastic indeed, let me tell you. They were all benefited, though they couldn't bring their babies during the lockdown, coronavirus. But many a times, these pregnant ladies, after delivery, they do bring their infant small babies to the kutir for Param Puja Guruji's blessings, and all of us feel very happy to see them. So they get blessings from all of us. Now, like Saroj Warke said, 50 or 60 years back, there were no investigations, and still Guruji gave such a wonderful program. Param Puja Guruji used to give medicines, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, वनस्पति शास्त्र का उनका गाढ़ा अभ्यास था. तो इस प्रकार की औषधि वो देते थे, not only to the pregnant women but also to other ladies, other gents. Now you know medical science is advanced. The test we can do easily, all sonography and all, and monitor. So I sincerely feel, this is a message from me. I sincerely feel that modern medical science and the ancient yoga science should go hand in hand, so that we can all live in a much healthier and therefore a happier world. परम पूज्य गुरुजी ने एक पूरा खजाना हमारे सामने रख दिया है, और उसे लेना हमारा काम है. इट्स फॉर अस टू टेक. तो मैं कहूँगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो निहाय. With this, I conclude this session, and all are waiting, eagerly waiting. This is lunch time, so all must be hungry. But let's all start with Om Sahana Bhavatu, like we do before taking food. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Yes, you may disperse, you may have food now. Yeah,
धन्यवाद श्रीमती। आज के इस सत्र का समापन सभी विषयों का बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करते हुए ताई ने किया है। धन्यवाद ताई। और मैं शास्त्री मैडम को नम्र निवेदन करती हूँ कि सीमा ताई का वो पुष्पगुच्छ देकर सत्कार करें। धन्यवाद शास्त्री मैडम, धन्यवाद ताई। अभी हमारा अभ्यास सवेरे से बहुत हो गया है और इसके साथ साथ अभ्यास के साथ हमारा जठराग्नि भी बहुत प्रदीप्त हो गया है, तो उसको शांत करने के लिए कुटीर की ओर से अभी भोजन की व्यवस्था की है। सभी को भोजन अपनी जगह पे यहीं मिलेगा, तो सभी लोग यहीं उसका आस्वाद लेंगे। हरिओम। 1 से 2 यह हमारा लंच टाइम रहेगा। 2 बजे सभी लोग फिर से अपनी जगह पे आ जाएंगे आगे के सत्र के लिए। हरिओम। युक्त पूरक 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 धन्यवाद। दोपहर के इस सत्र में मैं दिनेश रानड़े सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सबको अपना पहला सत्र बहुत उपयोगी लगा रहेगा। अभी भोजन का आस्वाद लेने के बाद हम अभ्यास की तरफ वापस चलते हैं। मैं सभी साधकों को वापस निवेदन करता हूं कि वो अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें। इस सत्र में हम रजोनिवृत्ति, PCOS, PCOD, मध्यम वयन स्त्रियों की प्रजनन संस्था, पुरुष प्रजनन संस्था पर योग के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रघुनंदन जी आठले सर है। वे तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए। वे अंबिका योग कुटीर के ट्रस्टी है। कुटीर के योग प्रसाद पत्रिका के कार्यकारी संचालक है। आठले सर BN बांदोड़कर कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। सन 2000 से आठले सर ने बांदोड़कर कॉलेज में योग वर्ग शुरुआत किया था और अनेक विद्यार्थी उसका अभी भी लाभ ले रहे हैं। अभी मैं आठले सर को इस सत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आठले सर। योग माता गायत्री, परम पूज्य निकम गुरुजी और आप सभी को मेरे प्रणाम। परिषद के इस सत्र में मैंने पहले शब्द डाला था भोजन के उपरांत ऐसा, तो आप समझ जाते मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसलिए मैंने उसको फिर से डिलीट कर दिया, लेकिन ऐसा कह के फिर से उसको बता दिया है। परिषद के इस सत्र में हमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलेगी। सबको साउंड ठीक से आता है या एको होता है? एको कम कर सकते हैं? एको कम करिए।
उन विषयों में मेनोपॉज का इंटीग्रेटेड माने सम्यक अनेक पैथी यूज करके, जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, ऐसे सभी से ट्रीटमेंट, उसको कहेंगे इंटीग्रेटेड व्यवस्थापन, मैनेजमेंट। इस पर हमारे जो वक्ता है वो अमेरिका से आई है। योग प्रैक्टिसेस फॉर पीसीओज, पीसीओज ये डिसऑर्डर है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, अभी आपने उसके बारे में सुना। महिलाओं के प्रजनन संबंधी बीमारियों पर योग का परिणाम, मध्यम वयस्क स्त्रियों में प्रजनन संस्था पर योग का परिणाम, पुरुषों के प्रजनन क्षमता पर योग के उपचार। यह विषय हमारी दुबई स्थित एक साधिका है, वह पेश करने वाली है। और अंत में गुरुजी ने अनेक लोगों को प्रजनन विषयक समस्या से बाहर निकाला। उनमें से दो चुनिंदा और अद्भुत उदाहरणों की जानकारी आपको हमारे विद्यार्थी प्रिय शिक्षक और कुटीर के ट्रस्टी श्री सुनील कुलकर्णी जी देंगे। तो असल में हमने ये डिक्लेयर तो किया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक साधिका है अमेरिका से, एक है दुबई से। तो मुझे लगता है इसको हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। सभी को ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं। हाँ, खटाव जी, वो ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रांच है वो चलाते हैं और बहुत अच्छा डेवलपमेंट उन्होंने किया है, वो भी आए हैं। तो इट इज़ ट्रूली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो सभी ने सबको हार्दिक धन्यवाद। अभी मैं ये माइक सूत्र संचालक श्री रानडे जी को सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अटले सर। इस सत्र में हमारा पहला विषय है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फॉर मेनोपॉज बाय डॉक्टर साधना सामंत मैडम। बीज निर्मिति वैसे ही रजो निवृत्ति यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। इस बात का बड़ी सहजता से स्वीकार अगर हम करें तो ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। इस विषय की जानकारी हमें डॉक्टर साधना सामंत मैडम करेगी। डॉक्टर साधना सामंत अभी यूएसए में स्थित है। वे एमडी ऑब्स्टेटिशियन गायनाकोलॉजिस्ट है। वह AIHM अ ग्लोबल इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड मेडिसिन मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन की साथी सदस्य है। उनके पास ABIOM अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का सर्टिफिकेशन है। कैजर परमानेंटे मेडिकल ग्रुप कैलिफोर्निया और सोलुना हेल्थ इंटीग्रेटिव मेडिकल ग्रुप कैलिफोर्निया जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से वे संबंधित है। डॉक्टर मैडम आयुर्वेदा काउंसिलर, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर भी है। आप अंबिका योग कुटीर से 2020 से जुड़ी हुई है। मैं डॉक्टर मैडम को अभी मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़ गिव हर अ बिग हैंड। Good afternoon. Greetings to everyone. परम पूज्य निकम गुरुजींना त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करून, सुर्वे गुरुजींना अभिवादन करून आणि तुम्हा सर्वांना अभिवादन करून मी माझं प्रेझेंटेशन चालू करते। ओके, the first slide. Yeah. Okay, so since antiquity, menopause has been marker of transition in the woman's life. So, what is menopause? Menopause is defined
as the final menstrual period is confirmed by 1 year of amenorrhea, that is 12 months of no menstrual periods, consecutive 12 months. And it represents the cessation of ovarian function, thus the end of the woman's reproductive age. So as per straw staging system, there are 10 stages and 3 main categories of reproductive aging in women. It is important to know because this classification contains the menstrual patterns, hormonal levels and fluctuations and symptoms in each stage. So we can be proactive in management of the woman in these stages. So reproductive stages is the main first category. It starts from the first menstrual period, divided into early, peak and late. The peak is important because that's the best reproductive function woman has during that period, the most fertile period of the woman's life. And she is practically more or less healthy during that period. Next category is the menopausal transition, we also call as perimenopause. Usually it lasts for 4 years. This is the period between the reproductive stage and the final menstrual period. It's important because during this stage, this is the most symptomatic stage for the woman. The bothersome symptoms like hot flashes, sleep disturbances, irregular cycles, mood changes, sexual dysfunction, all are very severe during this period. So next stage is postmenopausal stage, early and late. It starts from final menstrual period continues till as long as the woman is living. So when the menopause happens, the next stage, next slide please. So despite all changes in modernity, very little had changed the age at which menopause happens. It is still the average age is 51 in Western countries, 46.2 in Indian women. Nearly 90% of women get menopausal between 45 to 55 years of age. And this varies according to their socioeconomic status, their marital status, parity status, and there are other factors also contributing to the age of menopause. So there is another terminology called early menopause when the woman get menopausal in between age 40 to 45. Nearly 5% of the women have gone menopausal earlier. There is another terminology called premature menopause. So this happens when woman gets menopausal before age 40. Very few, 1% of women undergo menopausal transition before age 40. And usually early menopause and this premature menopause has the woman has family history of early menopause, chronic chromosomal abnormalities. There could be other autonomous diseases, thyroid problem, medical treatment like surgeries done, removal of the ovaries, both the ovaries are removed, chemotherapy, radiation, sometimes lifestyle changes. The woman is not much problem in our country here, but in Western countries, women smoke a lot. So smoking is the great risk factor for early menopause. This woman start having the menarche, that is the first period before age 11, that also leads to the early menopause. So there are various factors. The importance of this, that early menopause and premature menopause increases the risk of cardiovascular diseases, the risk of bone loss, and decrease the functions of many other endocrines,
the Parkinson's disease and depression. So this is important. We should look out for these women and be proactive in managing them. Next slide, please. So these are the symptoms, menopausal symptoms and signs. We will be reviewing these symptoms briefly in next few slides. Next one. Irregularity of the menstrual bleeding. So that happens usually in early and late perimenopause. The cycles may change, may show lighter bleeding, maybe heavier bleeding, maybe bleeding duration is increased, or could be duration of the interval between the two cycles is decreased, and then ladies usually start skipping the periods and then finally go into the menopause. Sometimes irregular bleeding can happen in between the cycles too, but these are all normal changes, so not to get worried about. Next slide. Vasomotor symptoms. Yeah, this is the hallmark. Vasomotor symptoms are also called hot flashes or night sweats if they occur during the night time. It is the hallmark symptom and is the most troublesome discomfort-causing syndrome. Nearly 75 to 80% of women suffer through this, but only 20 to 30% report it to the doctor. Many of them, they don't. So it is our job to ask the woman, is she having this problem and how much it bothers her. So usually they last for 4 to 5 years, but 1/3 of women, nearly 30% of women may continue to have them for 10 years plus, and very few ladies may continue to have for nearly 20 years. So these are mediated by dysfunction of thermoregulatory center located in hypothalamus, causing the excessive flow to the upper body and face, followed by increased redness of those parts, followed by excessive sweating, and then it culminates into the shivering and feeling cold. Usually these symptoms may last for a few seconds or maybe for 2 to 4 minutes, and they are recurrent and transient episodes. They may happen during the nights. The ladies call this as night sweats and can disturb the sleep. These are triggered by spicy foods, caffeine, alcohol, citrus and tomato-based foods, chocolates, high-fat foods. So we can counsel the patient regularly also about these diet restrictions and what she can eat and what she should not. So next, please. Next one. See, this is vulvovaginal atrophy. This is, and this leads to the urogenital syndrome. These are the atrophic changes. Usually these atrophic changes happen in the vulvovaginal tissues, the bladder, and the urethra. This is because of the estrogen deficiency, which leads to decreased blood flow to these tissues and cause, you can see in the picture, the tissue which is on the left side that has good estrogen, so that's why it is thick. The other side is atrophic, that is thin tissue. And this is more prone to the trauma, with even mild physical trauma can cause the bleeding through this injury, it can get infected. So usually patients have the symptoms of vaginal dryness, decreased secretions, itching, unpleasant vaginal discharge because you may get vaginal infections, painful urination, urgency and urge incontinence, recurrent urinary tract infections, dyspareunia, that is painful sex. And that's why this vaginal bleeding, irregular bleeding can happen even the sexual activity. So this erogenital symptoms depends upon the importance of this erogenital syndrome and atrophic changes.
that they are progressive. They are not going to stop on their own, like hot flashes. If you don't treat them, then also eventually after a few years, some years, they are going to stop on their own. But if you don't treat this atrophy, these atrophic changes will be continued for rest of the woman's life. Sometimes can cause her misery because of all these symptoms. Next one. Next slide, please. The sleep disturbances. This may be due to general aging factor, or it could be because of the hormonal changes and lack of deficiency of estrogen. Other factors like nighttime urination, sleep apnea, chronic illnesses, chronic pain, depression, stress, negative mood, and hormonal fluctuations can cause sleep problems. So, not necessarily they are related because of only estrogen deficiency, but fortunately they respond to the estrogen. If we give the replacement therapy, this patient really do good as far as sleep disturbance is concerned. Of course, other complementary things like yoga is the solution for all these problems. We'll discuss about that later. Next one. The mood disorders. This is the perimenopausal and menopausal woman may be, these changes may be, they feel upset, they lose loss of control, they are irritable, fatigued, they're always in blue moods, depression, and these symptoms and the cognitive changes also, that is forgetfulness, concentration, decreased concentration, brain fog, all these changes may be due to estrogen deficiency or maybe due to other reasons like sleep, the stress, and sexual dysfunction, and all other problems happening in the woman's life. But these also do respond to the estrogen replacement therapy. The patients with PMS, that is premenstrual tension syndrome, the past history of depression, the sexual dysfunctions, significant stress going on in their life, these women are more risk to develop these mood disorders. Next one, please. Okay, bone aches and pains. Okay, these are the bone aches and pains. Is unclear if they are related to estrogen deficiency or rheumatological disorders, but they do respond to hormonal replacement therapy. The breast pain is more common in early menopausal stage transition because of the hormonal fluctuation, and it also responds to the treatment with the hormones. The headaches, the menstrual migraine is very well-known entity in all women, and they get agreed. These migraine headaches, premenstrual migraine headaches or menstrual migraine headaches gets worsened in perimenopausal period. But usually they are not the problem with menopausal patients. After the menopause starts, usually they go away. Next one, please. Nowadays, the longevity has increased. Women are living for very long years, many years. Longevity for women in Western countries is 81 now. In India, it is 72. But we have to think in this way that nearly 1/3 to half of the life women are spending in postmenopausal state. And they do have to face the consequences because of that. So we should be really paying attention to this period so that we can implement the preventive measures not to develop the diseases for the woman in this stage. So this stage, these long-term consequences are like osteoporosis, the cardiovascular diseases, the risk after menopause,
increased. This is because of the estrogen deficiency, because it changes the cholesterol pattern. The bad cholesterol levels are high because of estrogen deficiency, and good cholesterol levels are low. So definitely that is the risk factor. The dementia, osteoarthritis is definitely because of the osteoarthritis and body composition there due to the hormonal fluctuations, the lack of estrogen. When the body composition means patient gets the fat more and lose the muscle mass, and usually the fat collection happens centrally, that is in the abdomen. That is the precursor for the diseases. And the skin changes. Oh, okay, sorry. Can you put on your shall I? Sure. You can? No, I don't know where it is. Thank you. Now it is thick. Ashu bhai. Okay. Yeah. Okay. So there are skin changes. Because of lack of estrogen, the collagen in the skin and bone decreases. The balance also impaired because the loosening of the weakness of the musculature, and there is joint problem. And this definitely increase the risk of fractures, because if the fall and fracture increase the risk of morbidity and mortality in the woman. So next one, please. The osteoporosis. Osteoporosis is the compromised bone strength, and it is serious threat to the aging postmenopausal woman because it increases the risk for fractures, and the way I said earlier, the fracture increases morbidity and mortality in the woman. So lower estrogen levels are responsible for 2/3 of the bone loss around the menopause. Actually, the bone loss starts when there is fluctuations in the estrogen levels start in the early 30s, but all of us start paying attention to this factor once she gets menopause, or when we find that she has some osteoporosis problem by seeing she fractures easily, and that is already too late. So we have to be really proactive to stop this since the early age, early 30s. There are various other risk factors other than decreased estrogen hormones, and there are various medical treatments are available. You can go through the next slides, please. Yeah. Next one. Next one, please. Yeah. Okay. The osteoporosis. I didn't go through the risk factors, each and everything. Basically, those risk factors are included. It should be connected to the bone marrow density to do the FRAX score, and according to the FRAX score, we decide how the patient should be treated for osteoporosis. So those are the factors available for that. But most important, the risk factors for that, your lifestyle. If you had unhealthy lifestyle, that is lack of activity, not eating right, deficiencies of vitamin D or calcium, and smoking or excessive alcohol intake. So all those things are risk factors for osteoporosis too. So our aim should be towards the prevention of osteoporosis and the prevention of the falls. We don't want any woman to fall and fracture and land up with morbidity and mortality. So healthy lifestyle is important. Healthy diet, enough proteins, calories, plenty of calcium, vitamin D, which are essential for bone formation and density. Avoid smoking and excessive alcohol intake. Exercise every day, but at least 150 minutes per week.
and more resistance exercises is useful to keep the bone density intact. Avoid the falls, so you have to take the fall precautions all over at home as well as when you are outside the home. So caution when they're using certain drugs, because some of the drugs like Motrin or what we call as NSAIDs, which we give commonly for pain relief, those drugs should not be taken in long-term duration because they cause the bone loss and osteoporosis. Similarly, antacids, especially proton pump inhibitors, PPIs like omeprazole and all those things also should be used very cautiously because they cause osteoporosis. The other drugs, steroids, anticonvulsants, chemotherapeutic agents, they are needed, so they are being given, but we have to be active about that to take the precautions to prevent the bone loss in those patients too. There are various medical treatments are available, but you can go through drugs are there, but that we will not be discussing here. The next one, please. Next one. Next one. Next one, please. Okay. This I talked earlier. These are the long-term problems. Cardiovascular disease, I had mentioned about how the estrogen deficiency is increasing the risk factor of cardiac disease because of the changing the cholesterols. At the same time, there are so many other factors. Risk factors for cardiovascular disease comes with the aging also and the lifestyle of the person. Cancer is not related to menopause, but it is increased risk as the ladies are aging more. So we have to be proactively screened for the certain cancers like breast cancers, cervical cancer, colorectal cancer, endometrial cancer, ovarian cancer. So that's why we should not be neglecting that. We have to take every year those particular tests as needed. Same time, we have to keep the healthy lifestyle so that it will be, you will be preventing the cardiovascular diseases and other problems happening to the health of woman as she is aging through postmenopausal period. Next one, please. This is the management options for the menopausal symptoms, treatment of menopausal symptoms. Next one. This is the best treatment, fortunately or unfortunately, the best treatment for relief of menopausal symptoms is replacement therapy, hormonal replacement therapy. It comes in various forms. It could be just estrogen alone, estrogen progesterone combination. There are called bioidentical hormones also. And risk of this, it comes with the risks too. Risk of increased cardiovascular diseases, breast cancer, that is invasive breast cancer, increased risk of stroke, thrombotic episodes, pulmonary embolism. The benefits of this, that it gives the good relief of menopausal symptoms, decreases the hip fractures because it keeps the bone density, it decreases the colorectal cancer, decreases all-cause mortality for the woman if we could give hormonal replacement therapy. But we are not giving it nowadays because we are not sure if we give for long term, after 3 to 5 years, what will go wrong with the patient considering the risk factors. So what we know about hormonal replacement therapy today, that is, depends upon the effect of the hormonal replacement depends upon the route of administration, the timing of initiation. It produces the different effects. For example, if you give the oral tablets, it is more risky, it has more risk of thrombosis than the transdermal route of the hormone. So absolute risk of hormonal replacement therapy
used in healthy women between 50 to 59 are low, but can still have the risk of thrombosis, stroke, and cardiovascular events. So hormonal replacement therapy initiation in old women carries greater risk. The breast cancer risk increases with combination hormones beyond 3 to 5 years. And only estrogen gives little less risk for breast cancer, but still after longer duration, it may cause breast cancer. So we have to consider each woman's priorities and risk factors prior to initiating to the hormonal therapy. Next one, please. Alternative to the hormonal therapy, the non-hormonal prescription drugs, these are off-label use. They are in USA. Those could be antidepressants, hypnotics, anticonvulsants, antihypertensives, and neuroplastic pain drugs. Next slide. There are complementary and alternative medicine like soy isoflavones, Chinese medicine, herbs like black cohosh, cranberry, St. John's worts, valerian, vitex, and other off-label use of over-the-counter available hormones like topical progesterone and melatonin. Next one, please. The lifestyle changes is very important. Those are the alternative therapy to the hormonal therapy. So try relaxation techniques like yoga, meditation, eat healthy diet, get regular exercise, avoid hot flash triggers like caffeine, alcohol, spicy food, etc. Keep yourself clean, dress in layers and light dress, sleep in cool room, and you can consume some cold drinks, those who are getting recurrent hot flashes. Reduce the sexual discomfort and increase the sensitivity with moisturizers, lubricants, and vibrators, and you can get the counseling by your doctor too. So, most important to remember, women are going through very much many symptoms during perimenopause and menopause cause discomfort to them, but still you have to look at that as a positive, your great opportunity for women for the life-changing insights, empowerment, and personal growth. The menopause transition, the time afterwards, that will give that you can implement the lifestyle changes, healthy lifestyle changes, behavioral changes to ensure that they are remaining healthy for rest of their life. Next one, please. We can skip these, slides. Next one. Next one, please. Next one, please. Yeah. Next slide, please. So, yoga plays the very important role in perimenopausal and menopausal stages of the woman, and even for rest of her life. See, yoga postures, breath practices, and meditation are effective methods for stress management. If anyone dealing with stress from menopause or any other sources, find ways to incorporate a well-rounded yoga practice into their lives. Adopting a practice for menopause will depend on the needs of each woman. For example, when doing sun salutation, that is Surya Namaskar, moving through posture slowly, taking time to sense and feel the body in each posture is cooling and calming. But at the same time, if you are moving faster with more repetitions, will warm and energize the body. So this practice is easily adapted to accommodate all levels of ability and can be done on the mat or on the chair. So important thing that consistent practice of yoga modified for individual needs and abilities can help women recognize, accept, integrate, and transform the menopause experience and the intense feeling of stress that accompanies it.
Yoga for the, we'll go through, there are various yoga poses and various breathing techniques and meditations that will help throughout for this woman going through this menopausal transition and menopause and postmenopause. We'll review some of them over here. Next one, please. Oh, yoga for hot flashes. So cooling breath, that is Shitali Pranayam, can be done anytime and anywhere. The inhalation brings in cool air in the body, while the exhalation releases warm air. It helps, it helps to practice this breath consistently. So whenever needed, any lady starts feeling little warm, she can start doing it right away, and it will abolish the hot flush completely. You will not have to go through that. So it is important to practice this even beforehand and be consistent about using it. So alternate nostril breathing, the breathing patterns of 4, 7, 8 breathing practices, they are also cooling. We can incorporate restorative and cooling poses too. Too much tension in the body or need to hold on something can make hot flash worse. So relax poses done with proper support like bolsters, blankets or blocks can create complete relaxation, as in Supta Baddha Konasana. Other poses like downward facing dog pose, fan posture or Prasarita Padottanasana, reclining head pose, that is Supta Virasana, bridge pose, that is Setu Bandhanasana. These are also helpful, and there are many more. Next one, please. We'll go through other poses which are overall, they are helping to improve decrease the discomfort of menopausal symptoms. Cat pose. So the combination of these two poses moves your spine through a range of motions, affecting both the front and back of the spine. So when you open the chest in the extension position, you stretch the part of the body that relates to the sympathetic nervous system, what produces the flight and fight response and increases the adrenaline in the body. When you round the neck as in the cat position, you stretch the part of the body that relates to the parasympathetic nervous system, that is the relaxed part of the nervous system. So during menopause, your joints start to dry out. By fluidly moving between these two positions, you massage the joints and tissues around the spine, keeping them soft, supple, and young. And that is at great help because bone aches and back pain and all those things are very common during the menopause and postmenopausal state. Next one, please. Sphinx pose. So this is the chest opening posture, stimulates the sympathetic nervous system and counteract the sluggishness and depression. The stimulating poses like Sphinx are both energizing and rejuvenating. It reduces the fatigue. The Sphinx pose can be easy alternative to more challenging back bends. Lunge, this is the lunge pose, sorry. Fan posture. The fan posture has many benefits. As you get older, your muscles shorten and tighten. The two muscle groups that are most affected are the hamstring and inner thighs. Fan position targets both. Also stretches the spine and relieves mild back pain. Stretching is one way to directly affect the nervous system. That is why we feel great when we are relaxed. The fan posture is also an inversion. When the head is lower than the heart, receptors are triggered that lower the blood pressure, lowers the heart rate, and lowers the mental activity. And you feel calm and quiet.
This is helpful for hot flashes also. This fan position is used therapeutically for headaches, fatigue, and depression. And this is a safe and cooling variation of other inversions like headstand and shoulder stand. Could you go to the previous one, please? The lunge pose. Yeah, the lunge pose stretches the hip flexors and the psoas muscle. The psoas muscle connect the lower back to the upper thighs. The psoas can get tight if you spend lots of time sitting. That is what most of the ladies do. Sometimes at the work they have to sit in front of computer all day. It also constricts when you get stressed. So menopause and its shifting symptoms can cause shallow breathing too. So stretching the psoas frees up your breath and releases pent up tension. You can skip the fan position and the Sphinx, which I told already. This is the chest opening posture, stimulates the sympathetic nervous system and the counteracts sluggishness and depression. And stimulating poses like Sphinx are both energizing and rejuvenating. It reduces the fatigue. The Sphinx pose is easy alternative to more challenging back bends. Next one, please. Forward bending hero pose. We call Shashankasana. This is my absolute favorite one for menopause and menopausal ladies, because only if I have to choose only one pose, then I will choose this. It stretches the inner thighs, stimulates the front of the thighs, stretches the spine. Because the head is lower than the heart, it calms and cools the nervous system. It also directly rejuvenates the pelvic region. If your thighs are tight and you have knee problems, of course, make sure that you put the rolled up blanket behind your knees. Next one, please. The tree pose. It is a basic standing pose. Of course, standing in a tree pose strengthens the legs and improves spinal flexibility, which makes it great pose for staying in shape for women in menopause. That is equally important. It also boosts up concentration that counters the memory loss due to menopause. Next one. Even it improves the balance also. Next one. Okay. Before that is a triangle pose. The prior slide, one slide prior, triangle pose. Yeah. So this stretches the abdominal organs and improves the digestion. It strengthens the muscles, cuts off extra fat deposited around the waist. It also is beneficial in overcoming the depression and anxiety that most of the women go through during the menopause. Next one, please. Reclining bound angle pose. This is a very good restorative pose to relieve back pain and soothe the hot flash. In reclining bound angle pose, the action of moving the heels towards the groins enhances the blood flow in the pelvis and strengthens the pelvic floor muscles. It stretches the inner thighs, groins, and knees. It relieves the tension in muscles on the body, reduces hot flashes, relieves fatigue by increasing energy level, relieves stress, mild depression, and thus practicing this reclining bound angle pose as yoga for menopause works wonders and relieves lots of physical pain. Next one. Downward facing dog pose. It is one of the therapeutic yoga for menopause as it helps in calming the brain, relieves stress, and mild depression. It energizes the body, relieves fatigue, stretches the legs, back, arms, and shoulders, hamstrings, calves, arches, and hands. It relieves headaches, insomnia, back pain. It promotes joint flexibility and prevents osteoporosis.
That is very important. That is often, this is most common, this is often complaint of the menopausal ladies. It relieves most of the menopausal symptoms. Next one. Low lunge pose. So besides this, low lunge pose improves breathing in menopausal women due to expansion of the chest muscles that relieves the stiffness and muscle fatigue. Other symptoms of menopause like indigestion, high blood pressure, low metabolism also improve practicing this pose and reduces the abdominal fat too. Warrior one pose. This pose, this intense stretch opens up the chest, shoulders, hips, and elongates the spine fully. The body in warrior one pose is exposed to natural air, cooling down the hot flashes. This posture is therapeutic for insomnia, arthritis, and it burns the excess fat. Hence, it is must to do yoga for menopause. Next one, it is Pavanamuktasana. It improves digestion and strengthens abdominal muscles. It also strengthens the back, arms, and legs. And this is helpful in relieving muscular cramps, and hence it is practiced as yoga for menstruation. Especially these menstrual cramps in the beginning, usually ladies face this in the beginning when they start the menstrual periods in young age, but that continues, that may repeat again during the perimenopause. So this is helpful during that period also. This helps to decrease the weight also. Legs up the wall. This is quite a relaxing posture as it improves blood circulation, relieving trapped tension in the muscles. It leaves rejuvenating effects to the body, aiding in the fatigue elimination. Other symptoms of menopause like insomnia, anxiety, stress, etc. can also be treated easily with this pose. Next one is fish pose. So when practice crossing the legs, it elevates the blood supply towards the reproductive organs by reducing its flow to the legs. It also opens the chest and lowers the head below the heart. Thus it pumps more blood and oxygen to the brain, calming the nerves. Thus it is included in the yoga for menopause. Next one. So practicing this pose helps relieving backache, strengthen the legs, and improves flexibility of joints. It also leaves massaging effects on the abdominals and hips that result in relieving overall symptoms of menopause. Next one. In summary now, while hormonal replacement therapy can be effectively reduce menopausal symptoms, its safety is always has been controversial, especially for longer duration. Same time, non-hormonal pharmaceutical therapies have been shown to be less effective than hormonal replacement therapy, and they have their own adverse events restricting their use. So therefore, many women, even I would say across the world, they are using complementary therapies for their menopausal symptoms, and yoga is among the most commonly used one. The holistic approach of yoga promotes physical, mental, emotional health and benefits to those who practice it regularly with proper guidance. Yoga is free of cost, non-invasive, relatively safe method, fairly effective, and is strongly recommended to all women of perimenopausal and menopausal age. Yogic lifestyle emphasizes on prevention, leading to healthy, happy, and peaceful life for rest of the life period for a woman. So I highly, highly recommend it. All this presentation has been supported by multiple, there are 4 or 5 research papers I had attached to this. In short, it is plenty of research is going on throughout the world about yoga, use of yoga and complementary alternative therapies for health, for menopause.
And in the beginning, they were not conclusive reports, but as you go, if you go through the papers which I have attached to my presentation here, the last one, the paper I will just read the conclusion of that. It is the systemic review found, it says, effectiveness of yoga for psychological symptoms relief in menopausal women. So many menopausal women request complementary therapies rather instead of hormone therapy. Or in addition to that, yoga is preliminary recommended as an adjunct intervention for women who suffer from psychological as well as physical complaints of menopause, including hot flashes. So that's the last conclusion. Those are the paper in 2018, and then there is paper presented in 2021 also. So this is as more and more research is going on. In the beginning, they said yoga may be helping, may not be helping. They needed more research in that to support that use. But as the research is going on more and more, they started with agreeing that for psychosomatic or for psychological symptoms, yoga is definitely helpful, but they were doubtful about physical symptoms. But now the recent papers in 2018 and 2021 do suggest and do prove that yoga is helpful in all level symptoms, physical, mental symptoms for the patient in menopause, perimenopause and menopause. Thank you so much, very much for giving me opportunity to be here on the podium. Thank you, SAYK institution for this. Thank you all. Hari Om. थैंक यू डॉक्टर साधना सामंत मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। मेनोपॉज के बारे में आपने बहुत डिटेल्ड में जानकारी दी, वेरियस टाइप्स ऑफ मेनोपॉज, इट्स सिम्टम्स, इट्स इफ़ेक्ट एंड योगिक आसन के बारे में आपका मार्गदर्शन बहुत बहुमूल्य रहा। मैं अभी शास्त्री मैडम को अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर साधना सामंत मैडम का सम्मान करें। शास्त्री मैडम। डॉक्टर मैडम। शास्त्री मैडम अभी डॉक्टर साधना सामंत मैडम का सम्मान करेगी। थैंक यू मैडम वंस अगेन। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में की ओर जाते हैं। हम अभी PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या का योग द्वारा कैसे समाधान किया जा सकता है,
यह डॉक्टर उल्का नातू मैडम से सुनेंगे। डॉक्टर उल्का मैडम MD DGO यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बाय प्रोफेशन है। रिस्पेक्टेड मैडम ICAR सर्टिफाइड क्लिनिकल एम्ब्रॉयलॉजिस्ट है। आप डायरेक्टर ऑफ नेस्ट हॉस्पिटल नौपाड़ा थाना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ घंटाली मित्र मंडल, वाइस चेयरपर्सन ऑफ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ऐसे उच्च पदों पर कार्यरत है। आपने स्वास्थ्य के बारे में कई प्रोग्राम टेलीविज़न और रेडियो पे किए हैं। आपको योग रत्न अवार्ड, योग मित्र अवार्ड, तेजस्विनी अवार्ड, वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, नवदुर्गा अवार्ड, लोकमत शक्ति सम्मान अवार्ड, आदिशक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। आप जैसे उच्च शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति का व्याख्यान सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपको हमें मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू मैडम। हरी ही ओम। मी मराठीत बोलले तर चालेल का? धन्यवाद. कारण मला अस्वस्थ वाटत होतं की मी ठाण्यामध्ये आपल्या लोकांमध्ये मी विषय स्लाइड्स जे नॉन मराठी आहेत त्यांचा मी मनापासून सन्मान करते. स्लाइड्स इंग्रजीतून आहेत, पण एक्सप्लेनेशन लागेल तिथे दोन्ही भाषांचा वापर करू. ठीक आहे? बरं. प्रथम अंबिका योग कुटीरचे सर्वे सर्वा सुर्वे गुरुजी आणि सगळे मान्यवर योग शिक्षक आणि इथे उपस्थित असलेले काही माझेही शिक्षक आहेत सगळे, ते सगळे शिक्षक आणि माझ्या सह योग साधक बंधू भगिनींनो सगळ्यांना सादर प्रणाम. माझे गुरुजी योगाचार्य श्रीकृष्ण व्यवहारे यांच्या स्मृतीला वंदन करूनच मी सुरुवात करेन. आणि अंबिका योग कुटीरचे निकम गुरुजी ज्यांना मी खूप लहान होते, त्यांना मी माझ्या वडिलांबरोबर एकदा भेटायला आल्याचं मला आठवतं, पण दुर्दैवाने त्यांच्याकडून मला मार्गदर्शन नाही मिळालं. पण त्यांचेच विद्यार्थी म्हणून व्यवहारे गुरुजी होते आणि व्यवहारे गुरुजींचं अंबिका योग कुटीरशी सुर्वे गुरुजींचे अतिशय जिव्हाळ्याचं नातं होतं. त्यामुळे आज इथे सादर करताना मला माझा खूप मोठा सन्मान झाल्यासारखं वाटतंय. त्याबद्दल मी प्रथम सगळ्यांचे आभार मानते. आणि आता आपण सुरुवात करूया. आपण टप्प्याटप्प्याने पुढे जायचं आहे. ओके, विल गो ॲब्सोल्युटली स्टेप वाईज. थोडंसं पाटील तुमचा ना चेहरा याच्यामुळे अडतोय, तुमचा चेहरा दिसत नाही. माझी उंची वाढवली. मुद्द्याने आपण बघूया व्हॉट इज PCOS. आजकाल ना सगळ्यांना PCOS बद्दल इतकं माहिती असतं की पेशंट कन्सल्टिंगमध्ये आले की अशा जुन्या अशा 7-8 फाईल समोर ठेवतात. मॅडम मला PCOS आहे. मी म्हणते हरी ओम, शांत हो. पहिलं काय ते नीट तर सांग. दुसरं आहे योग म्हणजे काय आणि त्याच्याशी आपल्या या प्रॅक्टिसेस कशा आपल्याला जोडता येतील. आणि तिसरं मी म्हटलं तसं को रिलेट द बेनिफिट्स ऑफ योगिक प्रॅक्टिसेस फॉर PCOS. ठीक आहे? आता बघा, विल ट्राय टू आन्सर दीज क्वेश्चन्स फर्स्ट. आता हे जे प्रेझेंटेशन आहे ना, ते IIR इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्शन, परळला खूप मोठी संस्था आहे, KEMला संलग्न अशी. KEM माझी पेरेंट इन्स्टिट्यूट, त्यांच्यासाठी मी तयार केलेलं हे प्रेझेंटेशन होतं. पण ते अतिशय सायंटिफिक आहे. मला असं वाटलं की हा क्राऊड पण खूप सायंटिफिक आहे आणि त्यांच्यासाठी हे प्रेझेंटेशन योग्य आहे, म्हणून मी ते घेऊन आली आहे. सो इज देअर अ योगिक मेथडॉलॉजी टू डायग्नोज PCOD. योग हे शास्त्र रोगाचं निदान करणारं शास्त्र आहे का? हात वर करून सांगा. हो म्हणणारे किती आहेत आणि नाही म्हणणारे किती आहेत?
घाबरू नका, दोघांचं उत्तर बरोबर आहे. स्वामी चिन्मयानंदांना एकाने विचारलं होतं, स्वामीजी कॅन आय मेडिटेट वेन आय स्मोक? आणि दुसऱ्याने विचारलं, स्वामीजी कॅन आय स्मोक वेन आय मेडिटेट? कोणाचं उत्तर बरोबर आहे? स्वामीजींनी फार सुंदर उत्तर दिलं होतं, वेन आय मेडिटेट कॅन आय स्मोक. ते उत्तर बरोबर आहे, कारण मुख्य महत्त्व कशाला आहे? मेडिटेशनला. कळलं? तर त्यामुळे मुख्य उद्देश ज्या वेळेला रोग निदानाचा असतो, वेन युअर एम्फसिस इज मोर ऑन डायग्नॉसिस ऑफ एनी पॅथॉलॉजी, द methodology related to modern science would be more helpful. पण योगिक मेथॉडॉलॉजी इज इक्वली हेल्पफुल. त्याचं कारण आपण पुढे बघणार आहोत. पण योग माध्यमातून टू डायग्नोज अ डिझीज तेवढी प्राणशक्तीची जाणीव आपल्याला सगळ्यांना, सेन्सिटिव्हिटी आणि स्पेसिफिसिटी दोन्ही दृष्टीने असायला हवी, तरच आपण रोगाचं निदान योगाच्या माध्यमातून करू शकू, नाहीतर जमणार नाही. Second, can we explain the etiologic and risk factors responsible for PCOD in yogic language? कुठल्या कारणामुळे PCOD होतं योगाच्या भाषेत मला समजावून सांगा. देणार आहोत, आपण समजावणार आहोत. हां, सो लेट अस ट्राय अँड अंडरस्टँड. कॅन वी हेल्प रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ पॅथोजेनेसिस बाय हेल्पिंग द रिस्क फॅक्टर्स रिडक्शन, इटिओलॉजी फॅक्टर्स टू प्रिव्हेंट PCOS द योग वे? म्हणजे ज्यामुळे होतोय ती कारणं एकदा मला कळली आणि ज्यामुळे कसं ते निर्माण होत आहे त्याचं पॅथोजेनेसिस हे मला योग भाषेत कळलं, तरच मला योगाच्या माध्यमातून PCOD बरं कसं करता येईल हे मी सांगू शकेन. बरोबर? उदाहरणार्थ, मला कोरोना झाला. का झाला? कोरोना व्हायरसमुळे झाला. या कोरोना व्हायरसला प्रतिबंध करायला मला काय उपयुक्त आहे? कोरोनाची लस. हां, हे सरळ सरळ उदाहरण झालं. मग कुठल्या कारणामुळे मला PCOD झाला आहे आणि मग त्याच्यात योगाच्या माध्यमातून माझं उत्तर काय आहे हे मला कळलं पाहिजे. तिसरं, ऑल्सो कॅन वी रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोमॉर्बिडिटीज? कोमॉर्बिडिटी म्हणजे काय? PCOD बरोबर असोसिएटेड किंवा संलग्न असलेल्या दुसऱ्या गोष्टी. पतंजली म्हणतात की नाही, सहभुवा, बरोबर ना? तसे हे सहभाऊ कोण कोण आहेत त्याचे? याचे असलेले जवळचे भाऊ म्हणजे डायबिटीस, इन्क्रीज इन्सिडन्स ऑफ डायबिटीस, इन्क्रीज इन्सिडन्स ऑफ ओबेसिटी. तिसरा, इन्क्रीज इन्सिडन्स ऑफ हाय ब्लड प्रेशर, असोसिएटेड हायपोथायरॉइडिझम, ॲसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन. सांगाल ती गोष्ट थोडक्यात, म्हणजे नसेल माहिती आणि काही ढापलं तरी ते त्याला लागू होऊ शकतं. नेक्स्ट, मी ढापत नाही आहे. ॲड्रेसिंग सोशल अँड सायकोलॉजिकल इश्यूज. गमतीशीर स्टडीज आहेत बरं का. PCODमध्ये असोसिएटेड अँझायटी आणि स्ट्रेस किती मुलींना असतो? 100% असतो. त्यामुळे त्याचं उत्तर आपण शोधून काढूया का? लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट अँड कॅन वी डेव्हलप अ ट्रान्स सिस्टीम मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी. ट्रान्स सिस्टीम म्हणजे काय? म्हणजे माझं ॲलोपॅथी, समजा मी MD आहे आणि एका निष्णात योग शिक्षकाचं योगाचं ज्ञान हे मी एकत्रित करून काही देऊ शकते का समाजाला? योग अण्णांचं, आमच्या गुरुजींचं खूप आवडीचं वाक्य होतं, योग शुड बी मेड सोशली रेलेव्हंट. आणि हे वाक्य त्यांना विवेकानंदांच्या एका वाक्यावरून स्फुरलं होतं आणि संपूर्ण त्या वाक्याभोवती अण्णांचं पूर्ण जीवनकार्य संलग्नित झालेलं होतं. सो व्हॉट इज द एव्हिडन्स? जसं मॅडमनी आता लेक्चरमध्ये आपल्याला दाखवलं, त्यांनी योगाचे झालेले पब्लिश झालेले स्टडी दाखवले त्यांनी. अहो हे ना, हा सूर्य हा जयद्रथ असं आहे, ते दाखवा आणि सिद्ध करा. येस, हे सिद्ध होत आहे, म्हणून योग उपयुक्त आहे. आता डू वी अंडरस्टँड पॉलिसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम बेटर दॅन व्हॉट वी डिड 25 years ago? काही फरक नाही आहे, खरं सांगते. फक्त इन्सिडन्स वाढलेला आहे. मी अतिशयोक्ती करत नाही आहे. मी जेव्हा MD झाले त्याही गोष्टीला 35 वर्ष झाली, 36 झाली असतील. त्यावेळेला आमच्या OPDमध्ये, मी KEMला होते, वाडियाला होते, PCOD
अरे PCOD येईल असं, म्हणजे असं वाटायचं हां. किंवा त्या स्टाईन आणि लेव्हेंथल या शास्त्रज्ञांनी PCOD शोधून काढला तेव्हा 10,000त 1 असं PCODचा इन्सिडन्स होता. आणि आजकाल शहरी भागांमध्ये दर 100 मागे 40 ते 50 मुलींना PCOS आहे. मग काय झालं असं की ज्याच्यामुळे PCOD वाढला? मला सांगा ना, असं काय व्हायला पाहिजे की ज्याच्यामुळे PCOD इन्सिडन्स वाढायला पाहिजे? मग हा इन्सिडन्स इतका वाढला आहे की आज भारतामध्ये PCOD सोसायटी ऑफ इंडिया ही संस्था स्थापन झालेली आहे. डॉक्टर दुरुशा त्याच्या प्रेसिडेंट. आत्ता आमची त्याची कॉन्फरन्स झाली ज्याच्यामध्ये योगिक रोल इन PCOD हे एक पुस्तक निघतं आहे आता. आणि म्हणजे जे संपूर्ण मॅनेजमेंट ऑफ PCOD, आणि त्याच्यामध्ये कैवल्यधामचे डॉक्टर पाठकजी, डॉक्टर सतीश पाठक आणि मी, आम्ही त्याच्यावर योगिक मॅनेजमेंट ऑफ PCOD असा एक चॅप्टर त्याच्यात आता ॲड झाला आहे. मला सांगायचं आहे काय की आधुनिक शास्त्राने सुद्धा आता PCODसाठी योगाचा सहभाग हा अनिवार्य असा घटक आता मानला जात आहे दिवसेंदिवस. सो आर वी ॲज डॉक्टर्स हा प्रश्न मला पडतो की एक डॉक्टर म्हणून आम्ही समाजासाठी काय करतोय? हां, PCOD झालं तर त्यांना अपत्य प्राप्तीसाठी आम्ही भरपूर ट्रीटमेंट स्ट्रॅटेजीज डिस्क्राईब करतो. हां, मग या डॉक्टरांकडे मग लॅप्रोस्कोपी करतो, मोठ्या मोठ्या सिस्ट असतात त्या रप्चर करून त्याचं जे काय असेल पॅथॉलॉजी काढायचा प्रयत्न करतो. किंवा जी बीजनिर्मिती होत नाही आहे त्या बीजनिर्मितीला उत्तेजना व्हावी म्हणून आम्ही भरपूर औषधं देतो. या औषधांनंतर आम्ही IVF सारखी ट्रीटमेंट मोडॅलिटीसुद्धा सजेस्ट करतो. आधुनिक उपचार खूप आहेत, पण PCOS होऊ नये म्हणून आपण काही प्रिव्हेंटिव्ह स्ट्रॅटेजी राबवू शकतो का? त्याचं उत्तर आपण शोधणार आहोत. आणि जर झालंच असेल तर तो होऊ नये किंवा तो बरा करायचा आहे, नको आहे मला हे सगळं घाण, तर त्यासाठी मला काय करता येऊ शकेल हा आता आपण अभ्यास करतो आहोत. लर्निंग द इंटिग्रेशन इज की टू सक्सेस. जर आम्हाला PCODची लढाई जिंकायची असेल तर PCODसाठी आधुनिक शास्त्र आणि योगशास्त्र याची सांगड घातल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. पेशंट्स आमच्याकडे येतात म्हणजे डॉक्टर होमिओपॅथी ट्राय करतोय, बरेच दिवस झाले होमिओपॅथी ट्राय करतोय. मग थोडे दिवस झाले मग ते सोडून देतात होमिओपॅथीला, काय बरं नाही, काय फरक नाही. मग जातात आयुर्वेदाकडे. हां, डॉक्टर सगळं पंचकर्म ट्राय केलं, नॅचरोपॅथी ट्राय केलं, सगळं ट्राय केलं, आता तुमच्याकडे आलो म्हणून आता ॲलोपॅथी पण ट्राय करा. पण शेवटी कुठल्याही पॅथीला आपला विरोध नाही असायचं कारणच नाही आहे. सगळी शास्त्र ही बेसिकली शास्त्र आहेत. पण मराठी भाषेत एक म्हण आहे, आग लागली रामेश्वरला आणि बंबनेचा सोमेश्वरला. हां, मूळ प्रॉब्लेम एकीकडे आहे. द प्रॉब्लेम इज विथ युअर लाईफस्टाईल अँड लॅक ऑफ एक्सरसाइज, फॉल्टी फूड हॅबिट्स. आणि तुम्ही जर त्याच्यासाठी होमिओपॅथी करत राहिलं तर होमिओपॅथी काय तुमची भूक कमी करणार आहे की काय खावं आणि काय खाऊ नये याच्यावर होमिओपॅथी नियंत्रण आणणार आहे? तुमचं तुम्हाला बदलल्याशिवाय काहीही होऊ शकणार नाही. भगवद्गीता सांगते तुम्हाला, मी नाही सांगत. उद्धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधू आत्मा एव रिपुरात्मना. स्वतःचा उद्धार करायचा आहे, नाहीतर स्वतःचा आपण शत्रू पण असू शकतो आणि स्वतःचा उत्कृष्ट मित्र पण असू शकतो. आता हे अण्णांचे शब्द मनाच्या मनाने ठरवल्याशिवाय कोणाला काही करता येणार आहे का? नाही. मग आता आपल्या मनाच्या मनाला आपल्याला कसं वळवायचं आहे ते आपण शिकायचं आहे. इज देअर अ योगिक मेथोडॉलॉजी याचं उत्तर आपण घेऊया. येस, अ वेव्ह इन ओशन इज ॲट द कॉस्ट ऑफ हॉलो एल्सवेअर. हां, वेव्ह इन ओशन हे विवेकानंदांचं वाक्य मला एवढं आवडतं हे वाक्य की कुठेतरी भरती आली आहे म्हणून कुठेतरी जगमान्य सत्य आहे. हे कळायला काही तेच वाक्य देहाला लागू आहे. प्राणाचं अजीर्णत्व, प्राणाचं कुजीर्णत्व आणि प्राणाचं अतिजीर्णत्व या तीनपैकी एकच गोष्ट शक्य आहे ना. इफ देर इज नो बॅलन्स, शरीरामध्ये असमतोल झालेला आहे. याचं कारण काय आहे? कुठेतरी काहीतरी झोल झाला आहे, गडबड झाली आहे, बरोबर, लोचा झाला आहे याच्या भाषेत.
आता ही गडबड किंवा हा प्रॉब्लेम जिथे झाला आहे, समजा क्ष ठिकाणी कमी झालं आहे, प्राणिक एनर्जी आपली एकीकडे जिथे जास्त झाली आहे तिथून काढायची इथे टाकायची. सोपं आहे का हे? नॉट ॲट ऑल. इट इज नॉट इझी. फॉर दॅट आपल्याला स्वतःला कळायला पाहिजे कुठे जास्त झाले आणि कुठे कमी झाले. आणि त्याच्यासाठी पहिलं महत्त्वाचं, योग ही आत्मदर्शनाची पहिली पायरी. योग हे जीवनशैली आहे. अँड अलर्ट अँड व्हिजिलंट लाईफ इटसेल्फ इज साधना. मला असं वाटतं की वाय डू वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू फिजिकल प्रॅक्टिसेस डिस्क्राईब्ड इन योग. अशी काय असं नाहीत का योगाने लिहिलेली, PCODला ऋषीमुनींनी लिहिली आहेत? ट्राय अँड अंडरस्टँड दिस. Alertness and vigilance when you are living a good life, that itself is yoga. विषय न संपणार आहे, पण तरी पण योगेन आत्मदर्शनम. अण्णा आमचे मला सारखी आठवण येते कुठेही लेक्चरला गेलं की बृहद याज्ञवल्क्य स्मृतीमध्ये लिहिलेली योगेन आत्मदर्शनम ही योगाची व्याख्या, याच्यावर अण्णा तासन तास बोलत असत. स्वयं को जानो, आमचे स्वामीजी बिहार स्कूल ऑफ योगाचे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती. बस स्वयं को जानो. स्वयंला ओळखायला शिकलो ना, तिथे अर्धे आयुष्यातले प्रश्न कमी व्हायला लागतात. बस ॲक्सेप्टन्स इज हाफ सोल्युशन. मी चुकते आहे हे मान्यच कर. 95 किलोची एक मुलगी काल आली बरं का माझ्याकडे. काय मजा आहे, पाठोपाठ येतात ते असे होलसेलमध्ये 95 किलो 90 किलो. विचारायचं नसतं. एकाने कोणीतरी ना गुगलवर हल्ली रिपोर्ट लिहितात आपले, मला नवीन कळलं. आणि मग त्याने लिहिलं, नो दिस डॉक्टर इज युजलेस, शी वॉज बॉडी शेमिंग मी. हे मला शब्द पण नवीन कळायला लागले. माझ्या मुलींनी मला सांगितलं, आई सांभाळून बोलत जा, लोकांना हे बॉडी शेमिंग. म्हणजे मी 95 किलो वजनाच्या मुलीला म्हटलं, अगं बाळा तुझं वजन इतकं काय आहे ह्याचा तिला अपमान वाटू शकतो, मी ते म्हणत नाही, पण तू काय खाते. लगेच आज बाजूनी आई म्हणाली, अहो ती काहीच खात नाही. आता म्हणजे मला खरंच हसावं की रडावं का. म्हणलं मला एक सांग, आपण असं ठरवूया की आजपासून पुढचे 3 महिने तू फक्त पाणी पिऊन राहशील, नाहीतरी तू काही खात नाही ना. मग हे पाणी पिऊन तुझं वजन कमी होईल का नाही होणार? हां होईल. म्हणजे ह्याचाच अर्थ काहीतरी खाऊन ते वाढतंय हे तुला पटतंय ना. ठीक आहे, मग तू काय खायचं काय नाही याचा निर्णय तू घे. मी इथे फक्त तुला दिशा दाखवायचं काम करणार आहे. ऐकायचं की नाही हा ज्याच्या त्याचा प्रश्न आहे. सो पॉईंट इज, योगामध्ये अ वेव इन ओशन याच्यावर इतकी माझी गाडी घसरली, हरिओम. तर नो स्पेसिफिक सिस्टीम ऑफ डायग्नोसिस. या म्हणजे असं मी तुम्हाला म्हटलं तसं योग हे रोगाचं शास्त्र आहे का? नाही. किंबहुना जो अत्यंत स्वास्थ्यपूर्ण आहे त्यांनीच योग साधना करावी असं पूर्वी आपले ग्रंथ सांगत. पण ते उलटं झालंय, जमाना बदललाय. जो अस्वस्थ आहे तोच योगाकडे वळतो. दिस इज पॅराडॉक्सिकल. आपण म्हणूया ठीक आहे ना, काही का निमित्ताने होईना योगाकडे वळतायत ना, वी आर हॅपी. या सांगतो काहीतरी 4 शब्द कानावर पडले तर माणूस थोडा तरी बदलायचा प्रयत्न करू शकतो. सो ह्या शास्त्राचा जन्म रोग निदानासाठी झालेला नाही. किंबहुना कुठल्याही रोगासाठी स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन योगशास्त्राने दिलेलं नाही. दुसरं, डायग्नॉसिस इज बाय एक्सक्ल्युजन. ह्या रोगाचं आधुनिक शास्त्राला डायग्नॉसिस करता येतं का PCODचं? त्याला पण नाही काही. मजा आहे ना. मग आहे तरी काय हे? बाय एक्सक्ल्युजन. एक्सक्ल्युजन म्हणजे काय? ब्रह्माचं वर्णन कसं? न इति नेती नेती, हे नाही टिकमार्क करा, मग हे असेल कदाचित. तसं PCOD जाडेपणाला हे कारण नाही, मग बहुतेक PCOD असेल. हेअर ग्रोथ दिसते, दुसरं काय कारण आहे का? पोटात ॲड्रिनल ट्युमर आहे का? हे आहे का? ते नाही, मग PCOD असेल. थोडक्यामध्ये डायग्नोसिस ऑफ PCOD इज बाय एक्सक्ल्युजन. दुसरं काही नाही. म्हणून आम्हाला शंका येते की हे PCOD आहे. बरं मजा अशी असते ना, PCODचे पेशंट्स आले ना तर म्हणतात, डॉक्टर मला ना डॉक्टरांनी सांगितलं तुला ना PCOD आहे, पण तो अगदी माइल्ड स्टेजला आहे. आता अशी स्टेज वगैरे काही नसते. भाजी खारट आहे ती खारटच आहे. आपण म्हणतो ग्रेड 1 खारट झाली आहे, नाही
खारटच आहे. सो PCOD इज PCOD. देर इज नथिंग लाईक ग्रेड्स ऑफ PCOD. कसं आहे ना, तुम्ही एकदा स्वतःला ग्रेडमध्ये बसवलं नाही, एवढं काय अजून सिव्हिअर नाही झालेलं, त्यामुळे स्कोप आहे असं म्हणजे स्वतःलाच समजावून घेण्याची ही एक रीत झाली. पण एकदा आपण मान्य केलं की नाही मला आहे आणि मला बरं व्हायचं आहे, बस तो एकच मुद्दा आहे की जो तुम्हाला कन्व्हिन्स करू शकतो की हे सगळं करणं मला आवश्यक आहे आणि गरजेचं आहे. त्यामुळे पहिली गोष्ट ती स्वतःला पटवणं. आता दुसरं ओव्हरवेट, हा मुद्दा आपला डिस्कस झाला. ताण, मानसिक ताण. कसला ताण असतो सांगता येत नाही. आजकाल मी कुणाच्या लग्नाला जायलाच घाबरते. पुढल्या 6 महिन्यात काय बातमी कानावर येते सांगू शकत नाही. आता हा अतिशयोक्तीचा मुद्दा ह्यातला सोडूया, पण इतके डिस्प्यूट्स वाढायला लागलेत आणि या डिस्प्यूट्सचं कारण काय असेल? कारण आहे शांती, समाधान, सुख, आनंद कुणालाच नाही ना. एव्हरीबडी इज गॉन विथ द विंड. तसं एक जास्तीत जास्त ॲम्बिशन्स आणि अपेक्षा त्याच्या ओझ्याखाली आपण सगळे वाहत चाललो आहे. आणि एक नवीन व्हायरस, आमच्या पुस्तकामध्ये गुरुजींनी शब्द सांगितला, मोअरिझम हा नवीन व्हायरस सगळ्यांना झाला आहे. मोअरिझम म्हणजे हव्यासाचा व्हायरस. अरे कोरोना बरा होईल, हव्यास कसा बरा करायचा ना? एक मोबाईल, दुसरा मोबाईल, एक नोकरी, दुसरी नोकरी, ह्या अपेक्षा त्या अपेक्षा नाही संपत, कधीच संपत नाही. अँड हू हॅज टू सॅटिस्फाय? आपल्या मनाला शौच, संतोष, समाधान हे पतंजलींनी सांगितलेले यमनियम हे थोडा अंतर्मुख होऊया, विचार करूया. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, हे एवढं त्यातलं तप, स्वाध्याय, संतोष, तिनावर विचार करा. तप म्हणजे नुसतं काय उन्हात तापायचं नाही आहे, एखाद्या विषयामध्ये स्वतःला झोकून द्यायचं आहे. स्वाध्याय म्हणजे अभ्यास होऊ शकतो किंवा स्वचा अध्याय, स्वतःचा अभ्यास करायचा आहे. आणि ध्यान सोडून लेट गो. मी ती करणार आहे, पंचसूत्री सांगणार आहे तुम्हाला की PCODसाठी म्हणे काय एवढी बडबड केली, सांगितलीच नाही कुठली आसनं करायची, असं नाही आहे. वी आर कमिंग टू दॅट. तर इरेग्युलर लाईफस्टाईल. हल्ली तरुण मुलांना विचारलं की ते म्हणतात काय सांगता तुम्ही? 2ला झोपते डॉक्टर, मी 2ला किंवा 3ला अभ्यास करून झोपते आणि सकाळी बरोबर 10ला उठते. बरोबर आहे ना? झाली ना 8 तास झोप पुरी झाली की नाही? मग ते बरोबर आहे का? मग का बरोबर नाही? काय आर्ग्यू कराल तुम्ही मुलांबरोबर? मी त्यांना म्हणते तू मोबाईल लाईट गेल्यावर चार्जिंगला लावला तर चार्ज होईल का? तसंच आहे ना. रात्री तुम्ही जागून अभ्यास करत राहता, त्यावेळेला दिवसभराच्या कामाने, स्ट्रेसने मेंदू पूर्ण एक्झॉस्ट झालेला असतो आणि त्या एक्झॉस्ट झालेल्या मेंदूवरती तुम्ही अभ्यास आणि इतर ऑफिसची कामं आदळता. टू कोप अप विथ दॅट स्ट्रेस निसर्ग आपल्याला नको ते हॉर्मोन्स अधिक निर्माण करतो. हे बरोबर आहे का चूक आहे? ह्या स्ट्रेसला कोपअप करण्यासाठी टेस्टेस्टरॉन नावाचा पुरुषी टाईपचा हॉर्मोन वाढतो आणि टेस्टेस्टरॉनचं प्रमाण वाढल्यामुळे स्त्री बीजनिर्मिती थंडावते. निसर्ग काय म्हणतो? अरे तुला इनफ स्ट्रेस आहे, अजून आता तो बीजनिर्मितीचा स्ट्रेस देऊन आणि प्रेग्नंट राहिली चुकून तर काय करा, त्यापेक्षा बीजनिर्मितीच थांबवून देतो. That is language of nature to cope up with stress. So if you have irregular lifestyle, तर त्यामुळे होणारे जे परिणाम, बरं टू कोप अप विथ स्ट्रेस अधिकाधिक स्टिरॉइड हॉर्मोन्स निर्माण होतात. मी नेहमी फिजिओलॉजीच्या आमच्या टेक्स्टबुकमधलं एक वाक्य सांगते. एक ताणाचा प्रसंग किंवा एक ताणाची आठवण म्हणजे प्रत्यक्ष घडलेला नव्हे, त्याची आठवणसुद्धा रक्तामध्ये आपली स्टिरॉइडची पातळी 20 पट वाढवतो. म्हणजे एकावेळी 20 स्टिरॉइडच्या गोळ्या घेण्यासारखं आहे. आता मला सांगा, स्टिरॉइडच्या 20 गोळ्या एकदम तुम्ही खाल्ल्या तर तुमची ॲसिडिटी कमी होईल का वाढेल? तुमचं वजन कमी होईल का वाढेल? बरं, त्या आमच्या शर्ली टेलिस आहेत, नागेंद्र गुरुजींबरोबर होत्या, आता पतंजली योगपीठात होत, छान मैत्रीण आहे माझी. तर या शर्ली मॅडमनी ओबेसिटीवर संशोधन केलं, खूप त्यांचा रिसर्च पब्लिश्ड आहे आणि
त्याच्यामध्ये त्यांनी दाखवून दिलं की अधिकाधिक आपण जागरणं केली तर रक्तामधले लेप्टिन आणि ग्रेलिन हे 2 हॉर्मोन्सचं संतुलन बिघडतं. ग्रेलिन जी इज फॉर ग्रीड आणि लेप्टिन इज फॉर लीन, या 2 हॉर्मोन्सचं संतुलन बिघडल्यामुळे ओबेसिटीला आपण जन्म देत असतो. म्हणजे एका इरेग्युलर लाईफस्टाईलच्या मध्ये तुमचे किती हॉर्मोनल चेंजेस दडलेले आहेत ते बघूया. ओबेसिटीमुळे सांध्यांची झीज होते, होणारच ना. एवढं वजन पेलून त्या सांध्यांना म्हणजे त्या गुडघ्याला आणि त्या टाचेला, बरोबर ना, लहान वयामध्ये गुडघे कामातून जातात. जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स खूप एन्जॉय करतात कारण लहान वयामध्ये सांधे बदलण्याची शस्त्रक्रियांचं प्रमाण दिवसेंदिवस खूप वाढलेलं आहे. पाठकण्याचं आरोग्य बिघडण्याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. बरं, फूड फॅडिझममुळे काय होतं, पूर्वी आपल्याकडे मॅल न्यूट्रिशन असायचं म्हणजे कुपोषण होतं. आजकाल मॉल न्यूट्रिशन आहे ना, आहे की नाही. याच्यामुळे काय होतं आहे की अतिरिक्त चरबी जी आहे ती आपण खातो आहोत आणि घरी आल्यानंतर साजूक तूप पोळीवर घाल म्हटलं की डाएट आहे, बरोबर. आता अधिकाधिक मांसाहारी किंवा माझा कुठल्याही प्रकारच्या आहाराला विरोध नाही बरं का, गैरसमज नका करून घेऊ. विवेकानंद सुद्धा मांसाहारीच होते, तो मुद्दा नाही. पण ज्या वेळेला तुम्ही आहाराचं संतुलन बिघडवता त्यावेळेला रक्ताचा pH बिघडतो. अँड टू हाय प्रोटीन डाएटचं फॅड आहे ना, हाय प्रोटीन्स अँड नो कार्बोहायड्रेट्स, त्यांनी काय होणार आहे, रक्तामध्ये तुमच्या अति ॲसिडिक पदार्थांचं प्रमाण वाढतं. एंड प्रॉडक्ट्स म्हणजे उत्सर्जन करायचे आणि याच्यामुळे काय होतं की या उत्सर्जनाला किंवा या पदार्थांना विरोध करण्यासाठी शरीर आपल्या हाडांमधलं कॅल्शियम बाहेर खेचून घेतं आणि मग हाडं लवकर ठिसूळ होण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढलेलं आहे. करा व्हिटॅमिन D3 लेवल सगळ्यांचे रिपोर्ट हल्ली कमी येतात. म्हणजे आता गंमत वाटते मला की आता या लॅब्सशी आणि याच्याशी संधान बांधल्यासारखे रिपोर्ट्स घेऊन येतात लोक. म्हणजे आपल्या सगळ्याच जीवनशैलीचा सगळ्यावर किती वाईट परिणाम झाला आहे आपल्याला कळून येते. फॉल्टी स्लीप पॅटर्न. आमच्याकडे आम्ही 85 माझ्या हॉस्पिटलमध्ये विथ द स्लीप लॅब 85 मुलींवरती आम्ही स्टडी केला. देअर स्लीप स्टडी, देअर लेवल ऑफ अँझायटी, देअर ओबेसिटी, देअर मेटाबॉलिझम आणि डायबिटीस, सगळ्यामध्ये योग प्रॅक्टिसेसने अप्रतिम, तो पब्लिश व्हायला पाठवला आहे पेपर, इट विल बी पब्लिश्ड, पण अप्रतिम रिझल्ट्स येतात विथ योगिक प्रॅक्टिसेस. सो व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. म्हणाले हो काय बडबड करताय, बंद करा, कंटाळा येतो आम्हाला, नाही करायचं असलं काय. मग तुमच्या मॉडर्न मेडिसिनमध्ये काय काय सांगा. पण मॉडर्न मेडिसिनमध्ये ट्रीटमेंटला मर्यादा आहेत. ह्या मर्यादा इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये ज्या आहेत त्या मी इथे लावलेल्या आहेत. देर इज नो युनिव्हर्सल ट्रीटमेंट फॉर PCOD. कुठेही अशी एक वाक्यता नाही. ट्रीटमेंट इज सिम्पटम ओरिएंटेड. पिरियड नाही आला 2 महिने 3 महिने दिल्या 5 दिवसाच्या गोळ्या, एक सकाळ एक संध्याकाळ प्रायमोल्युटेनच्या. पिरियड आला, पेशंट खुश, डॉक्टर खुश, मस्त, एकदा गेले लगेच पिरियड आला, नो टेन्शन. सो इट हॅज इट्स ओन लिमिटेशन. नुसत्या गोळ्या घेऊन आपल्याला औषधांच्या कुबड्यांनी हा आजार बरा करायचा नाही आहे. हां, other than lifestyle recommendation, patients might not require any intervention. वस्तुस्थिती आहे, काही गरजच नाही कुठली एक्सेप्ट लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन. हे मी नाही म्हणत, हे जागतिक पब्लिश झालेलं जर्नल म्हणतं आहे. नो ड्रग्ज आर करंटली अप्रूव्ड स्पेसिफिकली फॉर PCOS. सगळा राम भरोसे अंदाजपंचे डॉक्टर्स देतात गोळ्या, मी पण त्याच्यात सामाविला आहे की ह्या फक्त ओव्ह्युलेशन इंड्युसिंग ड्रग्ज असतात. स्पेसिफिक असा रोल त्यांचा PCODला म्हणूनच हे औषध आहे असं नाही. टार्गेट्स फॉर फार्मॅकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शूड कन्सिडर अँड्रोजेन एक्सेस, ऑलिगो ओव्ह्युलेशन आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स. म्हणजे काय होते, या सगळ्या पेशंट्समध्ये बऱ्यापैकी रक्तामध्ये इन्सुलिनचं प्रमाण वाढतं बरं का. किती पॅराडॉक्स आहे लक्षात घ्या. इन्सुलिनचं प्रमाण खूप जास्ती असतं ब्लड टेस्ट केली तर, पण ब्लड शुगर खूप जास्त असते. आता तुम्ही म्हणा असं कसं, आपण ब्लड शुगर कमी करायला इन्सुलिन घेतो की नाही.
मग या पेशंटमध्ये शुगर पण जास्ती आणि रक्तातले इन्सुलिन पण जास्ती. असं का होतं? याचं कारण असं की इन्सुलिन रेझिस्टन्स त्यांच्या रक्तात निर्माण होतो. म्हणजे शरीरात असलेलं इन्सुलिन पूर्ण नाकाम होऊन जातं बिकॉज ऑफ अँटीबॉडीज. किती वाईट आहे ना ही परिस्थिती. म्हणजे यू शुड रिअलाइज की हेच जर आपण एक छोटीशी गोष्ट, स्टिच इन टाईम सेव्ज 9, थोडेसे मॉडिफिकेशन्स बदल आपणच आपल्यात करत गेलो तर मोठा प्रॉब्लेम आपला टळू शकेल. सो ट्रीटमेंट शुड बी क्रॉनिक, डायनेमिक अँड अडॉप्टेड टू चेंजिंग सर्कमस्टन्सेस. टेलर मेड अप्रोच अण्णांच्या भाषेत. या पेशंटला हीच ट्रीटमेंट द्यायची का? नाही. त्या पेशंटची परिस्थिती, त्याचं बाकी सगळ्या गोष्टी सगळं लक्षात घेऊन मग आपल्याला इंटिग्रेटेड अप्रोच तिला कसा लागू पडेल हे प्रिस्क्रिप्शन आपल्याला तिला द्यायचं आहे. आता आपण रोल ऑफ योगिक प्रॅक्टिसेस टुडे. योग. It is not a system of therapy but a method of living with sense and very good. स्वामीजींचं वाक्य आहे. परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती माझे परमगुरू, म्हणजे माझे गुरु योगाचार्य श्रीकृष्ण व्यवहारे, त्यांचे गुरु. हां, तर योग ॲज द योग लवर्स अँड प्रॅक्टिशनर्स बिलीव्ह इज अन इंटिग्रेशन अँड हार्मनी बिटवीन thoughts, words and deeds, or an integration between head, heart and hands. विचार, कृती आणि भावना यांच्याशी एक रूपता. कशाची? हेड, हार्ट आणि हँड्स. कर्म, भक्ती आणि ज्ञान या सगळ्याची एक रूप. काय वाक्य आहे ना. असं वाटतं अरे हे वाक्य जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने कळलं तर किती मजा येईल. म्हणजे उदाहरण देते. समजा मला एखाद्या माणसाचा भयंकर राग येतो. सगळ्यांना आपल्याला राग द्वेष कोणाला नाही कमी, सगळ्यांना येतात. उगाचच आपण आणतो तसं काही नसतो. तर आपल्याला समजा मला राग आला, ती समोरून व्यक्ती एका फुटपाथवरून येते, तर मी काय करते? हळूच फुटपाथ क्रॉस करते, दुसरीकडे जाते. तरी ती व्यक्ती येते समोर, काय तू तंद्रीत चालली आहे, लक्ष नाही का, मी समोरून येते. अरे वा, बघितलंच नाही मी तुम्हाला. बोलतो की नाही आपण? म्हणजे काय? विचार एक चाललेत, हातून घडणारी कृती एक आहे, भावना वेगळ्या आहेत. मग समजा उदाहरण देते, मी गाडीने समजा कुठे जाते, अजून एक उदाहरण, आणि त्या गाडीत माझं एखादं खूप आवडीचं गाणं लागलेलं आहे, 91.9 FM ला लागलं आहे. हां, आणि समजा मी उतरले गाडीतून आणि लगेच दुसऱ्या गाडीत बसले. त्या गाडीत चाललंय दुसरं रेडिओ स्टेशन 91.1, तिथे पण तेच गाणं. असं कसं होईल ना? सगळ्या चॅनल्सवर एकच गाणं एकाच वेळी सुरू. ऋषीमुनींचं ते व्हायचं. सगळ्या ऋषीमुनींच्या मनांमध्ये एका वेळी एकच चॅनल सुरू, आणि ते म्हणजे प्रेम. बस. देर इज नो अदर फिलिंग फॉर एनीवन एल्स एक्सेप्ट द फिलिंग ऑफ लव. जे जे भेटे भूत ते ते मानिते भगवंत. बस. मग जर समोरून येणाऱ्या व्यक्तीला मी भगवंत मानलं तर माझ्या डोक्यात तिरस्कार येईल का? नाही येणार. प्रेमाचीच भावना येईल. आणि हे जेव्हा होईल त्या क्षणी मी योगी झाले. स्वरूपे तदा द्रष्टू स्वरूपे अवस्थानम. बस. स्वतःचं रूप काय आहे? आनंद, सच्चित आनंद. त्या रूपाशी जेव्हा मी एकरूप व्हायला शिकेन तेव्हाच खऱ्या अर्थाने मी योग साधक होईन, असं आपल्याला मानायला हरकत नाही. या टप्प्यापर्यंत जायला किती जन्म लागतील माहिती नाही, पण आपल्याला गीता सांगते 100% पोचशील. मग सांगितले मग ऐक ना. भले आज चुका होतील, उद्या चुका होतील, पण मी म्हणते हरकत नाही. 365 दिवसांमध्ये 364 दिवस आपण असेच वागतो नेहमीसारखे. एक दिवस आयुष्यातला असा उजाडेल की माझ्या गुरूंनी मला सांगितलंय, आज तरी रागवत नाही. नवरात्र येत आहे आता. हां, नवरात्रामध्ये एक धरूया ना उपास. असत्य, अहिंसा धरूया ना, एक एक उपास. शौच, संतोष, चिडायचं नाही, हा एक व्रत धरूया. खूप फरक पडेल. PCOD कमी होईल. सो व्हॉट इज योग? योग हे नुसतंच योगा नाही. अण्णा म्हणायचे योग म्हणजे योगा नव्हे. योग म्हणजे काय?
इट्स अ सायन्स, फिजिओलॉजी, सायकॅट्री, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, HRD आजच्या भाषेत, स्पिरिच्युअलिटी, अध्यात्म, सगळे योगामध्ये. सो इट्स अ व्हॅल्यू ॲडेड एनरिच्ड लाईफस्टाईल. खूप अण्णांचं वाक्य आहे, इट्स अ व्हॅल्यू. ही मूल्यात्मक जीवनशैली आहे. नुसतीच जीवनशैली, नुसतंच रात्री झोपलं आणि सकाळी उठलं असं आहे का? नाही. मूल्यात्मक आयुष्य जगायचं आहे. आणि मूल्य म्हणजे कुठली मूल्य? यमनियमांची मूल्य. कळतंय? हां. अनुरतिपरितत्वे सततम नियम स्मृतः. बरोबर स्वामीजी म्हणतात. म्हणजे काय? परितत्वे, त्याचंच स्वतः लक्ष द्या ना, तिथेच लक्ष ठेवा. परितत्वे हा नियम आहे आयुष्याचा, तर तो स्मृतीत राहिला तर मग मजा आहे. आता स्त्रीचं शरीर कसं आहे? ॲनॅटॉमिकल आणि स्पिरिच्युअल. इथे सगळे योगसाधक आहेत. स्वामीजींची ही डायग्रॅम आहे. फक्त एक त्याच्यामध्ये मला त्यांचा अतिशय आतमध्ये असलेला आत्ममय कोश आवडतो. पंचकोश सगळ्यांना माहिती आहेत हां, त्यामुळे मी त्याच्या खोलात जाणार नाही आहे. पण या पंचकोशांमधला सर्वात आतला कोश कुठला आहे? 6वा कोश आहे, तो आहे आत्ममय कोश. तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे, हे मी जात नाही. इट इज द अंडरस्टँडिंग, एक्सपिरियन्स अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ योग विच कॅन कन्वर्ट द प्रॅक्टिस टू कल्चर ऑफ योग अँड योगिक लाईफस्टाईल. नुसतीच योगाची थिअरी समजून उपयोग नाही. An ounce of practice is equivalent to tons of theory, स्वामीजी म्हणतात. अरे एक तरी तत्व जे आहे ना, निंबाळकर गुरुजी म्हणायचे, महाव्रत आहेत ना, ती थोडी तरी फॉलो करा ना. त्याला अणुव्रत म्हणूयात आपण. ह्या अणुव्रतांना आपल्या आयुष्यात आपण जर थोडं जरी फॉलो करायला शिकलो, स्वतःला खूप आपण बदलू शकतो. सो योग कॅन हेल्प PCOD बेटर वे बाय रिड्युसिंग द स्ट्रेस. हे तर 100% खरं आहे. चेंज इन ॲटिट्यूड, स्वतःत वृत्तीबदल झाल्याशिवाय पावभाजीच्या ठेल्याकडे आज मला आत्ता जायचं नाही, हे कसं कळणार? नाही, मी 100 वेळा लेक्चर दिलं तरी अंतर्यामी ज्याला वाटेल तोच बदलेल ना, उपयोग होणार नाही. त्यामुळे स्वतःमध्ये बदल घडवून आणायचा असेल तर स्वतःलाच त्याच्यासाठी प्रयत्न करायला लागतील. करेक्शन इन सर्कॅडियन रिदम. समजा योग साधना पहाटे उठूनच करायची आहे, हे जर इन्सिस्ट केलं तर आपोआप बाकी सगळं करेक्ट होत जातं ना. मग 10ला झोपलं, 5, 4:30, 5ला उठलं, अगदी ब्रह्ममुहूर्त नका गाठू पण जवळपास तर पोचाल, तर ते तरी आपल्याला करता येईल. को रिलेशन इन हॉर्मोनल स्टेटस, आणि त्यासाठी मग नंतर लागणारा औषधांचा डोस 100% कमी होतो. सो योगाचा हे कुठे आहे? तर शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, जाडेपणावरती आणि स्लीपमध्ये करेक्शन, या सगळ्यावर इफेक्ट होतो. हा आम्ही एक स्टडी केला होता, त्याच्यामधले आमचे हे रिझल्ट्स आहेत की ह्याच्या खोलात मी जात नाही. ठीक आहे. सो ॲडिपोज टिश्यू म्हणजे फॅटी टिश्यूवरती योगाचा कसा परिणाम होतो? तो TNF, फॅक्टर अल्फा, इंटरल्युकिन विच आर नोन टू बी इन्व्हॉल्व्ड, तर त्या लेवल्स यांचे जे आहेत त्याच्यावरती अतिशय चांगला परिणाम होताना दिसतो. आता आपल्याकडे वेळ नाही आहे ना, तर मला ही स्लाईड खूप आवडते खरं, की फिटनेस, तरुण पिढी आपल्याला विचारते ना की योगासनं का करायची, एक्सरसाइज का नाही करायचा. मग एक्सरसाइज म्हणजे कुठल्या प्रकारचे असतात, हे कुवलयानंदांचं आहे वर्गीकरण, माझं नाही आहे. तर ज्यांना उत्सुकता असेल ना, त्यांनी स्वामी कुवलयानंदांचं आसनं हे पुस्तक काढा. त्या आसनं ह्या पुस्तकामध्ये हे वर्णन स्वामीजींनी दिलेलं आहे. हे मी का सांगते ओरिजिनल स्रोत, की तुम्ही उत्सुक असाल तर जरूर त्या ज्ञानाचा फायदा घ्या. डीलिंग विथ स्ट्रेस, अष्टांग योग helps all limbs in dealing with stress. Yoga after all is nothing but science of mind, आणि ॲटिट्यूडिनल चेंजसाठी ते महत्त्वाचं आहे. पिनियल ग्लँड, बापरे, पिनियलबद्दल बोलावं तेवढं थोडं आहे. पिनियल ग्रंथी हा माझा अतिशय आवडीचा विषय आहे. पण या पिनियल ग्रंथीतून निघणारा मेलॅटोनिन हा जो हॉर्मोन आहे ना, तो मेलॅटोनिन हॉर्मोन इन्फर्टिलिटीच्या ट्रीटमेंटसाठी गोळ्यांमध्ये इन्क्लुडेड असतो. पण तो हॉर्मोन तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये रेग्युलर असेल तर शरीर निर्माण करतं.
मग मला सांगा, आता तुम्हाला औषध घ्यायची गरज आहे का? तुमचंच तुम्ही ते ठीक करू शकता? निश्चितच आपलं आपण ठीक करू शकतो, फक्त ते आपण फॉलो केलं सगळं सर्कॅडियन रिदम तर. ओके, ठीक आहे. हे सायंटिफिक स्टडी ठीक आहे. कोमॉर्बिडिटी, इन्फर्टिलिटीमध्ये प्रेग्नन्सी आणि त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स कमी करायला मदत होते, इन्फर्टिलिटीत मदत होते. नंतर टाईप 2 डायबिटीस मेलायटिस त्याच्यावर योगाने मदत होते. आपला एक स्टडी घंटाळी मित्रमंडळाचा आमचा पब्लिश झाला आहे जर्नलमध्ये की डायबिटीससाठी योगिक प्रॅक्टिसेसनी किती सुंदर फायदा होऊ शकतो. पँक्रियाटिक सेल्स ज्या असतात त्या अधिकाधिक सक्षम होतात टू रिलीज इन्सुलिन. हा आमचा स्वप्नांकुर म्हणून प्रोजेक्ट होता, फर्टिलिटीसाठी अण्णा असतानाची गोष्ट आहे. आणि हा प्रोजेक्टला ॲमॉक्स म्हणजे असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ऑब्स्टेटिशियन्स गायनेकॉलॉजिस्ट ह्या कॉन्फरन्समध्ये ह्याला बेस्ट रिसर्चचा गायनॅक कॉन्फरन्सला प्राईज मिळालं होतं. तर याचे रिझल्ट्स काय होते मी फक्त तुमच्यापुढे ते दाखवते की आमच्या साधनेमुळे काय काय साधनं होती. हे पवन मुक्तासनं, नुसत्या आसनांनी हे होत नाही, हे वृत्तीबदल पण आवडतात लोकांना आसनं कुठली ते सांगितलेलं म्हणून ती इन्क्लूड केली आहेत. ही तुम्हाला माहिती आहेत सगळी, मी त्याच्या खोलात जात नाही. पण या मुली होत्या आमच्या खूप छान लहान ॲडॉलसंट मुली होत्या PCODच्या. तर त्यांच्यामध्ये आम्ही नटशेलमध्ये हे प्रोजेक्टमध्ये सांगितलं होतं की त्यांच्यातल्या बीजनिर्मिती खूप सक्षम झाली होती. हे कलर डॉपलर सोनोग्राफी केली होती ज्या प्रेग्नंट राहू इच्छित होत्या त्यांच्यावर, आणि त्यांचे रिझल्ट्स एवढे सुंदर होते की 32 मधल्या जवळजवळ 7 मुली आमच्या त्या 4 महिन्याच्या बॅचमध्ये प्रेग्नंट राहिल्या होत्या. सो विच वॉज अ व्हेरी गुड स्टडी. दुसऱ्या प्रोजेक्टमध्ये 85 पेशंट्स, आत्ता मी तुम्हाला उल्लेख केला PCODचे, दॅट इज गेटिंग पब्लिश्ड. आता हे तुम्हाला चित्र दिसतं आहे, हे गायनॅक टेक्स्टबुकमधलं आहे. सर्वात वरती काय आहे? एन्व्हायरनमेंट, बाह्य वातावरणाचा तुमच्या मेन्स्ट्रुअल सायकलवर होणारा परिणाम. तो बाह्य आहे आणि आंतरिक पण आहे. आंतरिक कसा आहे? तुमच्या भावना, ताण या सगळ्यावरती बाह्य वातावरण परिणाम करतं. हे वातावरणाचा परिणाम होतो सेंट्रल नर्वस सिस्टीम किंवा मेंदूवर. मेंदू परिणाम करतो हायपोथॅलॅमस नावाच्या ग्रंथीवर. हायपोथॅलॅमस ही ग्रंथी पिच्युटरी ग्रंथीवर परिणाम करते. पिच्युटरी ग्रंथी ही मास्टर ऑफ एंडोक्राईन ऑर्केस्ट्रा आहे. पिच्युटरी ग्रंथी अंडाशयावर परिणाम करते आणि अंडाशयामुळे पिरियड येतो गर्भाशयातून. हे सगळं चक्र आहे. पण जेव्हा तुम्ही एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट आणि सेंट्रल एन्व्हायरमेंट, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा वगैरे सगळ्या या आपल्या प्रॅक्टिसेसनी त्याला जरा ट्रेनिंग, ट्युनिंग, कंडिशनिंग करतो, त्यावेळेला ते सगळं व्यवस्थित ताळ्यावर येतं. हे आपण दाखवलं आहे की हे सगळं, हे सगळ्यांना माहिती आहे की शारीरिक साधनेनी रिकंडिशनिंग, क्लिन्झिंग, लूझनिंग, रिलॅक्सिंग होतं आहे. मानसिक प्रॅक्टिसेसमुळे स्लोईंग आणि रिलॅक्सिंग होतं आहे. भावनिक प्रॅक्टिसेसमुळे सायलेन्सिंग ऑफ इमोशन्स होतं आहे. आध्यात्मिक प्रॅक्टिसेसमुळे ट्रँक्विलायझिंग इफेक्ट येतो आहे. सोशल म्हणजे आता हे सत्संग आहे, हा सगळे इतकी छान छान माणसं सगळी, त्यांना या विषयाची आवड आहे, गोडी आहे, ज्यांना बदलायची इच्छा आहे, ते सगळे विद्यार्थी पण इथे आलेले आहेत. सो इम्प्रूव्हिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डाएटरी बॅलन्स्ड मॉडरेट डाएट कंट्रोल्स द डिझीज. यथा अन्नम तथा मन. हां, बस हे योगातले लोक म्हणणारच आहे की अन्नामुळे आपल्या वासना आणि वृत्ती ह्याच्यावर सकारात्मक बदल घडून येत असतो. आणि त्यामुळे हे जे टार्गेट ऑर्गनला जो तुमचा ताण अफेक्ट करतोय, तो साधनेनंतर बघा कसे ॲरोज वर चाललेत. हां, देह साधना, प्राण साधना, भाव साधना. सो इंटिग्रेशन इज की टू सक्सेस. एक गोष्ट आपण विसरतो, काय? द ओनली सर्टन्टी दॅट वर्क्स इन ह्युमन बॉडी इज अनसर्टन्टी. बरोबर? कोणीही प्रेडिक्ट करू शकत नाही. आपण अरे हा आत्ता तर चांगला होता, संध्याकाळी दुसरीच काहीतरी बातमी येते. नो बडी कॅन प्रेडिक्ट. सो modern medicine tries to predict the unpredictable. We have to incorporate other modalities to reach the root cause of problem and eradicate it completely.
इफ वी कांट मेक इट थ्रू वन डोअर, रवींद्रनाथ टागोरांची कविता आहे, इफ वी कांट मेक इट थ्रू वन डोअर आय विल गो थ्रू अनदर डोअर, दुसरा मार्ग शोधू, और आय विल मेक अ डोअर. समथिंग टेरिफिक विल कम नो मॅटर हाऊ डार्क द प्रेझेंट. आणि ह्या शब्दांनीच मी इथे शेवट करते. गुरुजींचा सहजयोग, सातत्ययोग आणि समाजयोग हे 3 शब्द आहेत जे कानात गुंजी घालत असतात की या योगत्रयीच्या माध्यमातूनच आपल्याला पुढे जायचं आहे. आणि या PCOD सारख्या प्रॉब्लेमवरती आपण वी हॅव टू ट्राय अँड गेट ओव्हर इट थ्रू सम डोअर ऑर दी अदर. हरिओम. पुन्हा एकदा मला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. हॅलो. धन्यवाद उल्का मॅडम. फारच लाईव्हली लेक्चर होतं. लाईफस्टाईल चेंजेसचे दुष्परिणाम, योग म्हणजे काय हे आपण फार सुंदरपणे सांगितलं. आणि व्हॅल्यू ॲडेड एनरिच लाईफस्टाईल आणि इंटिग्रेशन ऑफ हेड, हार्ट अँड हँडचा कन्सेप्टही फारच चांगल्या रीतीने तुम्ही सांगितलात. सर्व मान्यवर व्यक्ति व साधकों की तरफ से आपका धन्यवाद. मैं अभी अखले सर को, उल्का मैडम को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं. थैंक यू मैडम. अभी हमारा 10 मिनट का चाय का ब्रेक है. चाय आपको अपनी जगह पे ही दिया जाएगा, तो कृपया करके सीट से मत उठिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर अगेन इमीडिएटली. कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए सब लोग. नेक्स्ट लेक्चर चालू हो रहा है. सब लोग चाय अपने सीट पर बैठ के पी सकते हैं. हाँ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. हमें अपना सत्र 5 बजे तक कंप्लीट करना है और अभी और 3 लेक्चर बाकी है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए. हाँ, ओंकार बोलिए काय करू का नको. हां, ओंकार चालू करू. ओंकार करू का डायरेक्ट करू. सीट पर बैठ जाइए कृपया. हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है. ब्रेक के बाद हम अगले विषय पर चलते हैं. इसमें डॉक्टर ज्योति कॉन्ट्रैक्टर मैडम हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी देगी और केस स्टडी भी प्रस्तुत करेंगी. रिस्पेक्टेड मैडम आरोग्य ज्योति वेलबींग की संस्थापक है. वह मुंबई में, कृपया आवाज़
कम कीजिए थोड़ा, हमारा लेक्चर चालू हो रहा है अभी। ओमकार लेना पड़ेगा। ओमकार लेते हैं। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, और एक बार ओमकार करेंगे। पूरक, दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे से हाथ में वहीं। धन्यवाद। अभी ये लेक्चर डॉक्टर ज्योति कॉन्ट्रैक्टर मैडम लेगी। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें जानकारी देगी और केस स्टडी भी हमें बताएगी। रिस्पेक्टेड मैडम आरोग्य ज्योति वेलबींग की संस्थापक है। आप मुंबई में लीडिंग होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, हेल्थ कोच और योगा इंस्ट्रक्टर है। आप सन 2000 साल में HERI होम्योपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक्टिव मेंबर है। आपने 3000 से ज़्यादा पेशेंट को होम्योपैथी से इलाज किया है। आज तक आपने विभिन्न हेल्थ कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप, योगा कैंप एंड नेचर अवेयरनेस कैंप संचालित किए हैं। आपको कोविड वॉरियर के रूप में भी सम्मानित किया है। प्लीज़ गिव हर अ बिग हैंड फॉर दैट। मैं आपको अभी अपनी केस स्टडी प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू मैम। माँ गायत्री को वंदन करते हुए और परम पूज्य निकम गुरु जी को भी वंदन करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। सो दिस इज़ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये विषय में मैं आपको आई एम अ होम्योपैथ एंड मैंने काफ़ी सारे केसेस होम्योपैथी से ट्रीट किए हैं, बट माई वेरी यूनिक वे ऑफ प्रैक्टिसिंग ऐसा है कि मैं सिर्फ मेडिसिन इज़ नॉट द ओनली थिंग। एज हमने पहले उल्का मैम से भी देखा सुना है कि एवरीथिंग इज़ नॉट मेडिसिन। मेडिसिन से अगर सब ठीक हो जाता था तो बस रामबाण इलाज मिल गया, हमने ठीक कर दिया पेशेंट को, पेशेंट विल बी डूइंग जैसे मन में आए मर्जी आए वैसे रह लेते थे लोग। लेकिन ये सही नहीं है। द मेडिसिन इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट हेल्प्स, बट इट हैज़ टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अभी नेक्स्ट सी हेल्थ का डेफिनेशन क्या बताया गया है। हेल्थ का डेफिनेशन बताया गया, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। अगर मैडम का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से आपने उल्का मैम का लेक्चर सुना होगा तो सुन रहे हाँ मेंसेस आ गया, समझ लो PCOD ठीक हो गया। तो इतनी आसानी से अगर ठीक हो जाता चीज़ें तो फिर मेडिसिन ही सब कुछ होता। लेकिन हेल्थ का विषय ही यही है कि ये संपूर्ण वेलबींग, हम जब हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम वेलबींग के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे फिजिकल फिटनेस की, हम बात कर रहे हैं हमारे मेंटल फिटनेस की, और हम सोशल वेलबींग, अपने आप को ज़िंदगी पूरी तरह से जीने का, ज़िंदगी का हौसला, ज़िंदगी का एक मकसद पाने का एक अलग जज्बा रहता है। आज इतने इसको हमने हेल्थ का डेफिनेशन जो WHO ने डिफाइन किया है, इज़ जस्ट नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिसीज़, एंड दैट इज़ वेयर योगा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अगर योगा को हम अपने ज़िंदगी में ढाल लें तो शायद से डिसीज़ ही ना हो। नेक्स्ट ये विषय अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है, इसलिए मैंने बहुत ही कॉमन, वेरी कॉमन एलिमेंट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जहाँ पे काफ़ी लेडीज़ ने ये सेक्शन ऑफ द ग्रुप कैन अप्रिसिएट दिस कि लाइक व्हेन इन द एज ऑफ 20s और 25s में आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ देम मस्ट हैव गॉट दिस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प,
डिसमेनोरिया जिसको कहते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या पीरियड मासिक का जो पेन होता है, ये अनुभव किया ही होगा। और उसके वजह से हमने कभी ऑफिस बंक किया है, हमने कभी कॉलेज बंक किया है, हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स रहते हैं जिसमें हमारी ज़रूरत होती है, बट वी आर जस्ट नॉट एबल टू रीच दैट। दिस केस स्टडी इज़ डन ऑन डिसमेनोरिया। मैं कांदीवली ठाकुर विलेज में जो हमारा ठाकुर साइंस कॉलेज है, वहाँ पे योगा का वहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ पे मैं योगा इंस्ट्रक्टर के हिसाब से भी मैं एज जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पे हमने 3 ऐसी महिला थी जिनकी एज ग्रुप अराउंड 20-25। सो उन पे ये स्टडी किया गया है। दे हैड वेरी सीवियर डिसमेनोरिया। ये प्राइमरी डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया ऑफ 2 टाइप्स, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी डिसमेनोरिया में क्या होता है कि जिसका ऐसा कोई ठोस पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट द पेन इज़ सो सीवियर कि आप अपना दिनचर्या नहीं कैरी कर सकते हो। यू हैव टू टेक रेस्ट, यू हैव टू टेक सम मेडिकेशन, सम मेडिकल हेल्प टू गेट rid of the pain. So here we have taken study of 3 such girls, college going girls, and they had this complaint of एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वेरी सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प। इतना होता था कि कॉलेज के लेक्चर्स वो कर ही नहीं पाती थी। उनको सिर्फ एब्डोमिनल पेन होना वही नहीं था, तो साथ में नौशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, देयर वाज अ काइंड ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। आप उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। ये सिम्टम, नो दिस इज़ वेरी कॉमन सिम्टम्स। आप कभी अपने घर में बेटी बहू या किन से बात करेंगे, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस कि दिस इज सो वाई। We have solution for this. So here, let me tell you a very interesting point of this is कि like इसमें यहाँ जो हमारे पास कैंडिडेट्स आए थे, we have not given any medicine, nor homeopathy, nor allopathy, nor Ayurveda, no medicine. Now see, the interesting part of this is, next slide. See, if you see in this, this women have these girls have joined on the basis of त्रैमासिक कोर्स, जो अपना त्रैमासिक कोर्स बेसिक कोर्स होता है। और बहुत ही स्टार्टिंग में विद इन अ वीक और 2 वी स्टार्ट टेकिंग जल धोती लेना स्टार्ट कर देते हैं। जल धोती हमने स्टार्ट किया, और ये हमारा एक नियम है कि 21 दिन हम जल धोती करते हैं। यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि 21 दिन का जल धोती किया जाता है स्टार्टिंग में। And to my surprise, this thing has come up. A girl, 2 of them in the age of 20s, बोलते मैडम सिर्फ जल धोती के बाद ये जो हमें उनको जब उनके पीरियड्स आए, they found there was no nausea, उनको एसिडिटी हुई नहीं, उनको जो जीभ मचलाता था या बहुत पेट में तकलीफ होती थी वो कुछ भी नहीं हुआ। पेन was very remarkably reduced, कम हुआ। In fact, they attended yoga class. Let me tell you. See, this is the thing. They attended yoga class. Otherwise, we see, why did you bunk the class? We usually ask them, why did you bunk the class? आए क्यों नहीं? हफ्ते में एक बार तो होता है। But they have come in the class. Can you see the magic? सिर्फ केवल जल धोती और कपाल भाती। अभी डिसमेनोरिया में हम सिर्फ मानसिक त्रास से सफ़र हो रहे वैसा नहीं होता है, तो शारीरिक त्रास से सफ़र हो रहे वैसा नहीं है, तो मानसिक रीत से भी हमें बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है कि कब तक चलेगा, यानी जब तक मेंसेस चालू है तब तक ये तकलीफ रहती ही रहेगी। ये ऐसी नौबत, ऐसी थिंकिंग आ जाती है। सो दिस इज़ अ फियर, इट्स अ फियर फैक्टर। एवरी मंथली अ फियर फैक्टर आ जाता है कि अरे पीरियड्स आने वाले हैं। दैट इज़ अ फियर, and with that fear women they leave the life, the whole life. But this is a very I must say this is an important finding what we have seen कि जल धोती करने के बाद, सिर्फ केवल जल धोती एक वीक का करने के बाद, this girls have noticed कि their pain was reduced, the acidity. See what happens actually, there is a lot of acid secretion. पूरा क्रैम्प्स आने के वजह प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, और उसके वजह से जो क्रैम्प होता है उससे सारे सिस्टम पे असर होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, और उसके वजह से पित्त बढ़ने के बाद हेडेक होना है, तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस बढ़ रहा है। सो एवरीथिंग यू आर एडिंग ऑन ओनली। जल धोती से सिंपल थिंग यू आर वॉशिंग। ये बात मुझे समझानी नहीं पड़ेगी कि जल धोती होती क्या है।
सो जल धोती से इससे क्या फ़र्क नज़र आया है कि एक्सेसिव जो एसिड सिक्रीट हो रहा है ना वो निकल जा रहा है. व्हेन एक्सेस एसिड इज रिमूव्ड, योर डाइजेशन, योर एलिमिनेशन पार्ट इज़ वेरी क्लियर. आपके बॉवल्स भी क्लियर हो रहे हैं, उससे स्वच्छ हो रहे हैं. इसके वजह से आपका नेचुरल जो इम्बैलेंस, आपके केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, वो बैलेंस हो गया. सी द साइंस बिहाइंड दिस. द केमिकल बैलेंस हो रहा है, आपका होम्योस्टेसिस हो रहा है, एसिड सिक्रीशन कम हो गया है. So naturally your body is now prepared to cope up with every small pains or changes that is happening in your body. And there where you will find कि जल धोती और कपाल भाती हम करते, जैसे अभी सर ने ओमकार ले लिया सबको शांत करने के लिए, इमीडिएट इफेक्ट. सब जो बड़बड़ कर रहे थे, ये ब्रेक लिया था तो सब शांत हो गए, सब बैठ गए. So कपाल भाती has such a wonderful effect, it gives you immediate stress relief. आप शांत सिर्फ मुंह से ही नहीं तो मन से भी शांत हो गए. सो दिस थिंग आई विल इंसिस्ट. लेडीज, जेंट्स, आप अगर अपने घर में बेटी या बहन या जो भी आपके घर में स्त्री है जिनको ये तकलीफ हो रही है, टेल देम इमीडिएटली. दिस इज प्रूवन नाउ कि जल धोती करो, कपाल भाती करो, यू विल rid ऑफ योर menstrual पेन एंड certainly आई थिंक यू विल एंजॉय गोइंग टू कॉलेज ऑल्सो. So this is what we have found कि they haven't bunked their college. After 13 weeks का कोर्स होने के बाद this was a thing कि बोले अभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, हमें फॉर्मूला मिल गया है इसका. That was a very good feedback what we got from the candidates. दूसरा है कंधर आसन. कंधर आसन, ये कंधर आसन ऐसा एक अपना आसन बहुत ही लाभदायक है फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए. दिस आसन हेल्प्स नॉट ओनली, जो पोस्चर है, ये पोस्चर से ही आपको पता चल जाता है कि कहाँ अपने प्रेशर आ रहा है. इट कम्स ऑन योर थायराइड यहाँ पे. तो थायराइड के यहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो आपका थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट हो रहा है. एंड और हार्मोनल चेंजेस हैपन्स ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द थायराइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे आपका प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो आपको पीरियड्स या फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, या जिनको मासिक इरेगुलर हो गए हैं या टाइम पे नहीं आ रहा है, तो उस पर भी उसका असर अच्छा हो रहा है. प्लस इट इज़ एक्टिवेटिंग द यूट्रस. सी, उसका तान पूरा पेल्विक फ्लोर पे हो रहा है, पेल्विक रीजन पे इतना तान आ रहा है, उसका स्ट्रेच आ रहा है. इट इज़ एक्टिवेटिंग वहाँ का चक्र को एक्टिवेट कर रहा है, पेल्विक फ्लोर का, जिसको हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, वो एक्टिवेट हो रहा है. इसलिए आपका यूट्रस और मेल्स में टेस्टिस एंड स्पर्म्स का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है. सो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गई. So this is a very good thing what we have noticed कि कंधर आसन has played an important role in solving reproductive system का thing. Next. Now let me discuss, this is very interesting case, a very interesting case which just recently I'm still dealing with this particular case. He's a 60-year-old male. इनका ये सिचुएशन था कि उनकी बेटी की शादी हुई मई में. प्रॉब्लम माइट बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और वी डोंट नो, वी हैवंट लोकेटेड ऐसे बोलते हैं ना मैडम कि कुछ नहीं मिला तो ये होगा तकलीफ, जैसे अभी उल्का मैडम ने डिस्क्राइब किया. तो कुछ ऐसा ही स्ट्रेस, द वेरी कॉमन थिंग वी लेबल, हाँ स्ट्रेस की वजह से ये तकलीफ हो गई है. सो दैट वाज अ थिंग दैट हैज़ हैपन, और वो उनको एक्यूट थायराइड सिस्ट हो गया था विच ही गॉट ऑपरेटेड. बट नेचुरल है, जब कुछ गांठ यहाँ पे दिख रही है, बढ़ रही है, यू गेट पैनिकिंग एंड यू स्टार्ट अप्रोचिंग द डॉक्टर्स. तो वही वो हॉस्पिटल में कोकिलाबेन में गए थे और उन्होंने फिर वहाँ पे अभी बड़ा हॉस्पिटल खुला है तो चीरफाड़ तो करनी है. सो उनका सिस्ट निकाला गया. But yeah, thyroid is preserved, only the cyst was removed. But what has happened after surgery? After surgery, this man has suffered from sudden retention of urine. This was in the month of June. Sudden retention of the urine हुआ, उनका urine पेशाब रुक गया उनका completely. And like now see, lay person doesn't understand कि what is happening. लेकिन पेशाब रुक गया है, 1 दिन निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिया. The third day he is getting now panicky, what is happening, why am I not passing urine? Then he approaches the doctor. See now, he has passed a lot of time in that, and now he approaches the doctor and doctor says, catheter डाल दो अभी, let the urine get flush off.
और उनका कैथेटर डाल के यूरिन ये निकाल दिया। फिर सोनोग्राफी की, सोनोग्राफी में प्रोस्टेट ग्लैंड वाज एनलार्ज, इन्फ्लामेशन था, उसमें एब्सेस हो गया था उनको। And the biggest factor was that कि he lost complete sensation of getting urge of urine. जैसे हमें अभी पानी पिया है, चाय पिया है, थोड़ी देर में सबको सुसु लगेगी. So we get that sensation of urination. This man has complete loss of sensation. He doesn't feel like urine हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है. Completely that is called urine incontinency. So he has suffered from that. And for that the doctor has done some kind of like हाँ prostate बढ़ गया, चलो उसका ये करते हैं, abscess हो गया, abscess drain कर दिया, abscess drain कर दिया, फिर आ गया उनको diaper पहनना चालू कर दिया, क्योंकि now the urine keep dribbling, he doesn't understand what to do. For 1 month with the medication and this, he was on this particular diaper day and night. And the most disgusting part was this, कि he was actually losing a lot of hope, and he was thinking कि this is now lifelong problem or what I'm suffering from. The doctor said कि नहीं ये शायद से एनेस्थेशिया से हुआ रहेगा, उसका असर हुआ रहेगा. But 1 महीना बीत गया है, 1.5 महीना बीत गया है, there is no resolution for this problem. Then unki wife, she is a very good friend of mine. So she discussed कि Jyoti, this has happened to my husband. What do you have done? Then I got this particular history from him. Why don't you come down to the clinic? Well, let us start with the treatment. So then I got the urine. So you will see here कि he approached me in the month of August. In the month of August, 16th of August, he approached me and I told him, get the urine test done. Let us see what is happening with the urine. I think there can be some inflammation because he was having a pain in perineal region. Usko pelvic region में बहुत pain भी था उनको. And complete loss of confidence. He just don't want to do anything. Absolutely, he was hopeless and loathing like ये डायपर पहन के, ये उम्र में डायपर पहन के घूमना पड़ रहा है मुझे, ये एक बात आ गई. एंड वाइफ के सपोर्ट से वो क्लिनिक में आ पाए, यानी इतना वीकनेस उनको था. So what we found in the urine, the pus cell was about 200. There was a lot of red blood cells also, and there was bacterial growth also in the urine case में अपने को मिला findings. What I started with the homeopathic treatment for him, and I have given him Chimafila and Calendula mother tincture, जो usually ये जो urine infection होता है उस पे काम करता है, और causticum मैंने दिया था. But most important thing what I told him was this, कि you start doing Ashwini Mudra. I told him, you start doing this Ashwini Mudra, you feel that sensation inside, you feel, you hold the contract, your this Ashwini Mudra आप सबने किया होगा, आप सबको पता होगा कि Ashwini Mudra होता क्या है. Please if you can show me the next slide. See, Ashwini Mudra. यहाँ पे जो अकुंचन हो रहा है, the contraction हो रहा है, क्या कौन से लेवल पे हो रहा है, आपका एनस जो रीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस आपका ये प्रोस्टेट का रीजन है जो जहाँ से यूरिन पास हो रहा है वो रीजन भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी आपने वहाँ के नसों को चेतना देने का काम किया है. So Ashwini Mudra, and I told him do Kandar Asan and Paschimotaasan. Please do this, and along with the medicine. To my wonder, to my absolutely it was I was wondering कि like 1.5 महीने से वो ये एलोपैथी ले रहे हैं और उनको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा. How fast I should expect the result now? But within a week, now the man is coming in my clinic walking on his own without wife support. He came alone and he told me कि ma'am, you know that I've stopped wearing diaper at the night time. Morning में अच्छी तरह से मैं urine pass कर रहा हूँ. Early morning he could pass, and whole night he is able to hold the urine well. Dribble नहीं हो रहा है. He is able to hold the urine well, and morning he is able to pass good quantity of urine. पहले बहुत retention हो जाता था, थोड़ा सा post voided urine भी काफ़ी रह जाता था. So even that thing has taken care of. दिन में थोड़ी अभी तकलीफ हो रही है कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं हो गया तो dribble हो गया तो होता भी है, तो इसलिए मैं पहन लेता हूँ diaper. So after 10 days we got again the urine test done, where we found that pus cells अभी काफ़ी कम हो गए, 100 के नीचे चले गए हैं, और red blood cells भी काफ़ी कम हो गए, bacteria भी काफ़ी कम है, but they are still there. Then when he continued with the asana and with the medicine along, he was now gaining weight also. The health, he started gaining health. Now the thing is that after 2 weeks of duration, what we found is he was able to go out, वो भी सब बाजार लाना करना and all that he is doing on his own, like. But he says, just to be safer,
I wear the diaper. But now I wonder ki what has worked now. See, keep the medicine aside. It is apne, with this particular asana, Ashwini Mudra, Paschimottanasana, and अपना कपाल भाती, as well as कंधर आसन से, उनको जो वहाँ पे उनका जो चार्ज हो गया, उनका जो nervous system का उनका activation हुआ, उनको जो feeling जो completely loss हो गई थी, he regained that feeling. So this is a very good study what we have done. Now this is one particular case. Probably if we might get such more cases, we might help with a lot of evidences to help out कि this particular asana helps a lot in curing this case. As such, Ashwini Mudra को फिजियोथेरेपिस्ट में केगल थेरेपी कहा जाता है, एक्सरसाइज कहा जाता है, जो वो करते भी हैं. बट अपने यहाँ जो ये अश्विनी मुद्रा के साथ में जालंधर बंद भी होता है, उसके वजह से थायराइड भी एक्टिवेट होता है. एंड थायराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड. सी ही सफर्ड फ्रॉम थायराइड सिस्ट, डू नॉट फॉरगेट दैट. एंड दैट ग्लैंड हैज नाउ स्टार्टेड फंक्शनिंग. So even that has helped his confidence. That has helped to gain him weight. That has helped him to come out from the stress. So this is a very good case what I have dealt with. And yeah, I would like to share only one small thing. I know I am taking much of your time. Just one. These are all reports of the patients what we have got. We have just got one more slide. Go to the last slide now. This is one more case actually. Please take next slide. Next. Next. This is a case of metrology. I will skip that because we don't have so much of time. We'll take a one case. Yes. Now this particular lady, she suffered from thyroid dysfunction and diabetes, and her diabetes level was not in spite of medication, she was taking allopathic medicine, modern medicine, and it was not under control. She holds a very good post in her college. She's a lecturer and she is HOD of her department, and she has a very responsibility wala unka ye hai, workload hai. And the biggest blow what she has gone through was कि COVID के time में 3-4 महीने के दरमियान में she lost her near and dear ones. Her parents, her brother, and that was a big blow on her mental stress, and with a lot of agony she has gone, which she was not able to come out from it. See, when this happened within the family, it's a very big challenging thing कि it is not that easy. कितने भी पढ़े लिखे हो आप, लेकिन मन पे जब आघात गिरता है तभी बहुत तकलीफ से सब गुजरते हैं, तभी अपना एजुकेशन भी काम में नहीं आता, ऐसा हो जाता है. So now I would like you to listen to her video, her feedback, what she has done, जो त्रैमासिक कोर्स में हमने उसने ज्वाइन किया हमारे यहाँ, and what difference she has found. Please listen to her. बट वो अंदर से महसूस शुगर लेवल है जो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस का लेवल ऐसा नहीं कि शुगर लेवल में जो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस का लेवल ऐसा नहीं कि 200 था, अभी 100 हो गया, 50 हो गया, बट वो अंदर शुगर यू कैन मेजर बट स्ट्रेस यू कांट. मन शांति और स्ट्रेस रिलीफ, ये दो चीज़ें इतनी अच्छे से मैंने महसूस किया कि आई एम नाउ टोटली 100% इन. जो मेरा कैनवास पे नाम लिखना था वो लिख दिया है. और अभी योग की व्याप्ति जो होती है ना, हम लोग जनरली योग मतलब कुछ कसरतें करना, कुछ हाथ पाँव मिलाना, कुछ बॉडी फिजिकल फिटनेस देखते हैं. इट इज़ बियॉन्ड दैट. एंड वो इधर आके मुझे महसूस हुआ बिकॉज इट्स अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ योग क्रिया, शुद्धि क्रिया एंड टोटल अष्टांग योग, जो इधर आने के बाद पता चला कि वो क्या होता है. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस द पावर ऑफ ओम, जो यहाँ पे आके गदरे सर ने थैंक्स टू यू ऑल की हम लोगों ने जो अनुभव किया वो शायद शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं, लेकिन अभी वो अंदर जाने की प्रोसेस चालू हो गई. मैं एज आई टोल्ड यू, आई एम रिसर्च शोध, अभी ये आत्मशोध चालू हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सपीरियंस दैट. So you can see the difference.
So at the end, what I will say is I would certainly request Ministry of Ayush to, integrate yoga, because this is a holistic approach where we can change not only, we not only remove the disease condition, but it is very much important to have a better health, better well-being, and a longevity along with the well-being. That is more important. So yoga to be integrated, to be a part of every system of medical system, that should be incorporated in. Thank you so much. थैंक यू ज्योति मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। जलधौती, कपालभाति, कंधरासन, अश्विन मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन के फायदे उन्होंने अच्छे समझाए और मार्गदर्शन किया। आपका विचार और मार्गदर्शन का लाभ सभी साधकों को मिला है। मैं अभी हमारे कुटीर के अनंतराव कुलकर्णी सर को अनुरोध करता हूं कि वो ज्योति मैडम को सम्मानित करें। Thank you, madam, once again. अभी हम हमारे नेक्स्ट सत्र की तरफ जाते हैं। ये है सत्र डॉक्टर मनीषा सोनावले मैडम लेगी। इस सत्र में हमें मध्यम वयस्क स्त्रियों की प्रजनन संस्था पर योग का कैसे अनुकूल प्रभाव पड़ता है, इसका मार्गदर्शन हमारा केस स्टडी के द्वारा मनीषा सोनावले मैडम करेगी। डॉक्टर मनीषा सोनावले इज़ अ डॉक्टरेट इन जूलॉजी। आप खारगर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर योगा पद पे कार्यरत है। आप उड़ान ओम हेल्थ सेंटर खारगर में योगा ट्रेनर भी है। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीडैक से एडवांस कोर्स किया है। संकल्प इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड में आप डायरेक्टर का पद भी संभाला है। NCL पुणे, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, इन संस्थाओं में आपने संशोधन किया है। आपने बच्चे, गर्भवती महिलाएं और यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए अनेक योग शिविर लिए हैं। मैं आपको केस स्टडी प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर मैडम। सभी को नमस्ते। आज सवेरे से नमस्ते सभी को। आज सवेरे से हम लोगों ने बहुत अच्छे मान्यवरों के बहुत अच्छे लेक्चर्स सुने हैं। अभी मैं एक केस स्टडी आपके सामने पेश कर रही हूँ जो मिडिल एज वुमन के लिए है। मिडिल एज वुमन, आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खुद के जो प्रोफेशनल लाइफ है उनकी, अपने बच्चों की, अपने फैमिली की, एंड सारे जगह पर हर फील्ड में कहीं पर भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अनुमति नहीं होती खुद की, क्योंकि हर जगह पे उनको परफेक्ट रहना होता है। ये सब अटेंड करते करते हो जाता है कि उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। उनको खुद के हेल्थ के लिए, डाइट के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए टाइम नहीं होता है। बट हम लोगों ने ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स के साथ ये स्टडी किया है, जिसमें हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, कैसे खुद को लाइफ एंड वर्क, प्रोफेशनल लाइफ एंड फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, वो उनको ये प्रैक्टिसेस करने से उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं।
इनिशियली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोगों ने 35 to 50 एज के फीमेल्स के ऊपर स्टडी किया है। अप्रॉक्सीमेट 35 to 50 एज वो एज होता है जब बच्चे आपके मिडिल स्कूल एज में होते हैं या फिर हायर एजुकेशन में होते हैं, तो तभी मदर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये सारे जो मदर्स हैं वो बच्चों को देखे, खुद को देखे, खुद की हेल्थ को संभाले या घर के कामों को देखे या खुद के वर्क लाइफ को देखे, कहाँ पर फोकस करें उनको समझ में नहीं आता है। एंड मल्टीटास्किंग तो फीमेल्स को मिला हुआ वरदान है कि हर फीमेल को मल्टीटास्किंग करना ही पड़ता है। दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस एक्चुअली। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे 35 to 50 एज के हैं, हैविंग चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। तो उनको हमने इकट्ठा किया और उनको कहा कि ये प्रैक्टिसेस आप करके देखो, फिर आपको क्या बेनिफिट लगता है आप हमें खुद बताइए। तो 3 मंथ्स के लिए हमने उनके ऊपर प्रैक्टिसेस किए। डेली मंडे टू सैटरडे 1 आवर डेली प्रैक्टिसेस हुआ करते थे। एंड ये प्रैक्टिसेस में हम लोग बेसिक आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन कराते थे उनको। एंड ये प्रैक्टिसेस होने के बाद इनिशियली सभी लोग को कॉमन प्रॉब्लम होती थी कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको पेन्स होता है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दरमियान होती है। तो हर महीना उनको तकलीफ़ होना है, हर चीज़ में काम करना है, कहीं पर भी छुट्टी नहीं ले सकते, ना घर में ना ऑफिस में। तो कैसे हम कर सकते हैं? तो हमने कहा कि ठीक है, इनिशियली आपको जैसा हो सके वैसा करो, लेकिन करो। इनिशियली तो रेलक्टेंसी होती है, बट जैसे जैसे उन्हें 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन उनको जैसे जैसे खुद में इम्प्रूवमेंट महसूस होने होती है, बाद में उनका जो रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में हमने ये बताया कि उनको क्या क्या क्यों हमें ये स्टडीज़ करना है या क्यों हमें ये प्रैक्टिसेस करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको वीकनेस होती है, मूड स्विंग्स होता है, एंजाइटी होती है। और प्रैक्टिसेस करने के बाद हमने जब इनिशियली उनको वर्बली बताया कि आपका स्ट्रेस रिडक्शन हो सकता है, हार्मोनल बैलेंस हो सकता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकता है, पीरियडिक पेन कम हो सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो सकती है। तो इनिशियली तो इट वाज लाइक कि देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, ओके चलो करते हैं, तुम कहते हो इसलिए करते हैं। तो वी वर लाइक फाइन। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया एंड सिंसियरली 3 मंथ्स डेली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे डेली 1 आवर वाज डेडिकेटेड टू फॉर देयर ओन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उसमें 30 फीमेल्स जो थे उनको विथ योगासन के प्रैक्टिसेस, प्राणायाम के प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस दिया जाता था। एंड कंट्रोल ग्रुप जो था उनको कोई प्रैक्टिसेस नहीं दिए जाते थे, उनको फिज़िकल एक्सरसाइज दिया जाता था। तो एट द एंड ऑफ 3 मंथ डेली सेशंस की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस शुरू हो गया वो बहुत अच्छा उनको महसूस होने लगा कि यस हमें इम्प्रूवमेंट लग रहा है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा लग रहा है, डे टू डे मूड स्विंग्स कम हो रहे हैं। ये प्रैक्टिसेस करने के बाद एक जो बेसिक प्रैक्टिसेस होते हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो वज्रासन होते हैं, भद्रासन होते हैं, जानुशीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, बालासन, बद्ध सुप्त बद्ध कोणासन, सूक्ष्म व्यायाम,
स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार, ये प्रैक्टिसेस देने की वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी आई मीन फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इतना इम्प्रूव होने लगी कि उनको डेली हम प्रैक्टिसेस उनसे करवाते थे, तो वो जैसे जैसे प्रैक्टिसेस करते जाते थे उनको बहुत अच्छा लगने लगता था। तो ये जो प्रैक्टिसेस हम उनको करवाते थे वो 3 to 5 टाइम्स हर आसन करवाते थे, एंड हर आसन में एटलीस्ट 15 काउंट्स तक उनको होल्ड करने को कहते थे पोस्चर को। तो ये करने से उनका जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होने लगा स्लोली। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। तो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस में सबसे पहले तो श्वसन मार्ग शुद्धि है, कपालभाति है, फिर उसके बाद हमारे जो प्राणायाम के प्रैक्टिसेस है वो प्रैक्टिसेस हम उनसे डेली करवाने लगे। तो जो अनुलोम विलोम के प्रैक्टिसेस है, अनुलोम विलोम कम से कम 2 to 4 मिनट्स तक हम उनसे करवाने लगे। जो भ्रामरी प्राणायाम है, हम सबको पता है कि भ्रामरी प्राणायाम डेली प्रैक्टिसेस करने से स्ट्रेस लेवल इम्प्रूव हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हाइपरटेंशन अगर किसी को होती है, उनको भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिसेस से हाइपरटेंशन कम होने लगता है, ये इफ़ेक्ट्स उनमें दिखने लगे। तो उसके बाद हम उनसे ओंकार चैंटिंग करवाते थे। ओंकार चैंटिंग डेली 11 राउंड्स एटलीस्ट करना ही करना है, सो दैट उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए, उनका जो एंजाइटी लेवल्स है वो कम हो जाए, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये प्रैक्टिसेस करने से उनको हम लोगों ने पैरामीटर्स जो डिफ़ाइन किए थे वो तो थे कि पेन्स ड्यूरिंग मेंसेस था, फिर स्टिफनेस था, फिर वीकनेस था, एंजाइटी था, एंगर था, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी लेवल्स, ये पैरामीटर्स हम लोगों ने स्टडी करने के लिए स्टार्ट किए थे। इमीडिएटली हम बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिसेस इसका पेन स्केल हमने ये डिसाइड किया था कि ग्रेडेशन अगर पेन 0 है तो माइल्ड, 1 है तो मॉडरेट एंड 2 है तो सीवियर, ऐसे हमने उनका पेन स्केल डिफाइन कर लिया था। तो डेटा कलेक्शन करके हमने बिफोर प्रैक्टिसेस एंड आफ्टर द एंड ऑफ 3 मंथ्स हमने उनके स्टडी किए कि उनके पेन स्केल में क्या चेंजेस हुआ है, कैसे उनका इम्प्रूवमेंट हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ में क्या चेंजेस हुए हैं वो हमने स्टडी किए थे। तो ये प्रैक्टिसेस करने के बाद रिज़ल्ट में हमें ये पता चला कि एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स हमें ऐसे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इम्प्रूव हुआ था कि पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिसेस, दैट वाज द बिगेस्ट गुड थिंग दैट वी एक्सपीरियंस्ड। एंड बेटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है, तो बहुत मतलब मैक्सिमम अबाउट 90% फीमेल्स ने ये बताया कि हमारा एंगर फैक्टर reduce हो गया। तो this was the result के flexibility and overall health improved physically, mentally and emotionally. That was the conclusion of the study. So the objective of my study was fulfilled, that yes, by giving specific asana and pranayam sessions to individual, we can achieve the good health, good mental health and good emotional health. Thank you so much. Hari Om. थैंक यू मैडम। 35 to 50 एज के महिलाओं के ऊपर योग का कैसा पॉजिटिव प्रकार, इसका अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, धन्यवाद। मैं अभी ललिता दीक्षित मैडम को अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर मनीषा सोनावले मैडम को सम्मानित करें।
Thank you, madam, once again. अभी तक हमने फीमेल फर्टिलिटी के बारे में जानकारी दी। अभी हमारा नेक्स्ट विषय मेल फर्टिलिटी के बारे में है। इस सत्र में हम पुरुष प्रजनन संस्था के बारे में डॉक्टर हिरल मेहता से जानेंगे। यह विषय हम ऑडियो वीडियो लिंक द्वारा हिरल मेहता हमें देगी। हिरल आईटी प्रोफेशनल है, एविएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड ब्लॉकचेन की विशेष ज्ञाता है। शी इज़ अ डॉक्टरेट स्टूडेंट विथ एमफिल एंड एमबीए एज अ मास्टर डिग्री। हिरल ने असिस्टेंट योगा थेरेपी कोर्स अलॉन्ग विथ YWI फ्रॉम YCB पूरा किया है। वो अंबिका योग कुटीर से बचपन से संबंधित है। मैं अभी हिरल मेहता की ऑडियो वीडियो क्लिप शुरू करने की विनंती करता हूँ। थोड़ा ऑडियो वीडियो क्लिप चालू करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी के फ्रॉम सुनील कुलकर्णी अभी पहले लेते हैं। इस सत्र में पुरुष प्रजनन संस्था के बारे में 2 केस स्टडी सुनील कुलकर्णी सर हमें बताएंगे। सुनील कुलकर्णी सर 2021 में RBI से मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हो गए। वे कुटीर में 1990 से जुड़े हुए हैं। 1993 में उन्होंने हठयोग प्राणायाम परीक्षा उत्तीर्ण की और उसमें वो पहले नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं। कुलकर्णी सर 12 साल से प्राणायाम के क्लास ले रहे हैं। कठिन आसन के वर्ग और CBD बेलापुर में स्पेशल क्रिया के वर्ग चालू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुटीर के सातारा, बार्शी, गोवा और नांदेड़ के योग वर्ग चालू करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो अंबिका योग कुटीर के ट्रस्टी है और कुटीर के एडमिनिस्ट्रेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं कुलकर्णी सर को अभी केस स्टडी प्रेजेंट करने के लिए निमंत्रित करता हूँ। हरिओम। धन्यवाद दिनेश। बीच में ही मुझे चांस मिला है, नहीं तो आई वॉज द लास्ट पर्सन। सुबह से हमने बहुत कुछ सुना है, ज्ञान पाया है, और सबसे बेनिफिशियरी आदमी मैं हूँ इसमें, क्योंकि जिसको कुछ भी मालूम नहीं होता है उसको ज़्यादा मिलता है। ये मेरा तत्व है। लेकिन अपना भांडा जो है वो खाली करके आना है, और उसमें मैं माहिर हूँ, तो इसके लिए बड़ा अच्छा लगा। और ये जिम्मेदारी जो है पुरुष वर्ग की केस स्टडी की, वो मुझ पर दे दी गई है। वैसे देखा जाए, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान तत्पशुभिर समाना, धर्मे एको अधिको विशेष धर्मेण ही न पशुभिर समाना, ये अपना वाक्य। आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें से मैथुन प्रोक्रिएशन, प्रजनन, संतति और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह विषय वैसा देखा जाए, दीज आर 4 बेसिक इंस्टिंक्ट, आहार निद्रा भय मैथुन। प्रोटोजोआ अमीबा से लेकर मनुष्य तक सभी लोग इसमें अपना कार्य कर रहे हैं, और उसको सिखाया नहीं जाता, कुछ उसको एडवाइस नहीं किया जाता है, लेकिन वो जन्मतः अपने मूलभूत स्वाभाविक प्रकृति या प्रवृत्ति होने से आगे बढ़ता जा रहा है। और ब्रह्मा जी भी यही चाहते हैं कि वह ये प्रजनन होकर आगे अपनी सृष्टि की निर्मित होती रहे। और इतना एक सुंदर इसमें यह है कि मुझे 2 दिन, थोड़े दिन इसके ऊपर विचार करने के बाद अभी हो गया। हमने एक श्लोक सुना है ईशावास्योपनिषद का, ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका सही ढंग से जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या है, जो पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण हो जाता है, और पहले वाला भी पूर्ण रहता है। क्या जवाब होगा उसका? संतति, प्रजनन। जो व्यक्ति, जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो खुद परिपूर्ण है, बच्चा निर्मिति वो भी परिपूर्ण है, और ये माँ से कुछ भी नहीं घटता है वो भी परिपूर्ण रहती है। तो इतने बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ है उसमें बिगाड़ हमने ही लाया है। उसका उत्तर इसमें भी है, समान एतत् पशु भी समाना धर्मो ही एको अधिको विशेषा। धर्म के अनुसार जो हमें गाइडलाइंस दिए है, जो एक चौकट बना कर दी है, उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे तो ये 4 बेसिक इंस्टिंक्ट भी हम अच्छी तरह से उपभोग नहीं ले सकते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और इसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ। सुबह से भी हमने बहुत लोगों से सुना कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो एडजस्ट करें, तो बाकी की आपकी जो उसमें परिवर्तन करना है, ये करना है, वो करना है, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो एक मैं आपको अनुभव बताता हूँ। शामतकर जी अगर है क्या यहाँ? शामतकर फ्रॉम उल्लासनगर नहीं आए हैं, ठीक है, नहीं तो उनको भी हम आपके सामने पेश कर सकते थे। उल्लासनगर शाखा से जुड़े शामतकर जी 1980 से 1987 से हमारे यहाँ अंबिका योग कुटीर से जुड़े हैं। उससे पहले की यानी 1984 की यह उनका अनुभव है। उनकी शादी हो गई 84 में, 84 में, और 2-3 साल उनको इशू नहीं था। एक मजे की बात है, इशू नहीं है इसका बड़ा इशू लोग करते हैं, और जो मोस्ट कंसर्न होते हैं उनको वो टेंशन निर्माण होता है। मोस्ट कंसर्न कौन है? मियाँ बीवी। इनको इशू नहीं, इससे ज़्यादा इशू घर वालों को और समाज वालों को होता है। उनके केस में भी वैसे ही हुआ। इशू नहीं है, 3 साल हो गए, टेस्ट करो, ये करो, वो करो, और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हम सब लोगों को मालूम है। तो पहली टेस्ट उनकी मिसेस की, शी वॉज ऑल राइट। अभी ये जाने के लिए झिझक रहे, दोनों में से एक को तो है ना, ये नहीं तो इसका तो होगा ही होगा। फिर इनको लेना जान लेकर गए, और इतनी बात सुनकर वो इतने हैरान हो गए। उनके इसमें जो जांच की गई, नॉट अ सिंगल स्पर्म वाज फाउंड। उनके वीर्य में एक भी शुक्राणु नहीं। और उन्होंने डॉक्टर जी का नाम भी दिया है, पटवर्धन डॉक्टर करके हैं। उन्होंने कहा 0 काउंट है, 0 काउंट को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनका भी बात कहना सही है, कुछ नहीं से कुछ निकल नहीं सकता है, कुछ होना तो चाहिए बेस के लिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ जोड़ दिए, निकल जाओ भाई। और हैरान हो गए शामतकर जी। उनका कारपेंटर का व्यवसाय है, क्या करो ऐसे। और अपने यहाँ जब पुरुष में ऐसी कुछ बात होती है तो बड़ा डिप्रेशन आता है उन सब लोगों को। फिर नेगेटिव थिंकिंग शुरू हुआ अप टू सुसाइड। लेकिन उनका नसीब अच्छा था, उनके दोस्त रामचंद्र चौहान जी उनको मिले और उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो अलग गलत कदम मत उठाइए, आप अंबिका योग कुटीर में जाइए, और फिर ऐसा है, वैसा है। उन्होंने क्या किया, वह अपनी जो किताब थी, उस वक्त सीडी वगैरह कुछ नहीं थे, वो किताब पढ़कर शामतकर जी ने घर बैठे योग की प्रैक्टिस की। उस कुटीर में आए नहीं, किस मुंह से आता था, मैं ऐसा बोलता था, क्यों आए हो? तो ये व्याधि जो है, जो उनमें कमियां थी, कमतरता थी, वो बताने में भी उनको
शर्म आती थी क्या करूं। तो घर में ही बैठकर उन्होंने बुक यही अपना गुरुजी मानकर पढ़ना शुरू किया और उस तरह से उन्होंने आसन वगैरह की क्रिया शुरू की। और कुछ दिन हो गए तो फिर उसे दोस्त ने कहा कि भाई चलो क्लास शुरू हो गया है, जाएंगे। तो वह कहाँ क्लास में पहुंच गए। तो उनकी तो तैयारी अच्छी थी, 9वीं तक की क्रिया उन्होंने अपने आप सीखी थी। ये एक उनका बड़ा पॉजिटिव और ठोस पॉइंट है। बाद में उन्होंने कहा चलो अभी गुरुजी के पास जाएंगे, इतना सीखा है। तो वो कुटीर में आ गए और गुरुजी ने उनकी पूरी बात सुनी, भाई त्रैमासिक कोर्स पूर्ण करो, पहली बात। तो उन्होंने त्रैमासिक कोर्स पूर्ण किया। बाद में उसी वक्त गुरुजी ने उनको कुछ नुस्खे काढे म्हणत होते गुरुजी, काढे पण गुरुजींनी काहीतरी त्यांना दिले। आणि बिफोर कंप्लीशन ऑफ त्रैमासिक कोर्स 1.5-2 महीने हो गए। गुरुजी को क्या लगा मालूम नहीं, गुरुजी ने कहा जाओ अभी टेस्ट करके आओ फिर एक बार। तो ये तो बोलो अभी 1-1.5 ही महीना हुआ है, नहीं जाओ। फिर वो टेस्ट करने के लिए गए तो नॉर्मल आदमी के इसमें जितने शुक्राणु होते हैं उतने शुक्राणु उसके इसमें पाए गए। ये शास्त्र और गुरुदेव का आशीष है। फिर उन्होंने कहा, गुरुजी की मर्जी उनके ऊपर थी कि भाई ये बड़ा अच्छा आदमी है, सीखा है, खुद सीखा है। तो गुरुजी ने कहा आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो वो तो एकदम हक्का बक्का हो गया, अरे यहाँ चॉइस भी है। पहले तो कुछ चॉइस ही नहीं था, अभी ये होने के बाद चॉइस भी है। हाँ, गुरुजी ने फिर उन्होंने उनके अनुभव में ने लिखा है कि गुरुजी ने मला कान मंत्र दिला, कुछ बताया नहीं उन्होंने। हाँ, कान मंत्र दिला आणि त्यानुसार आम्ही वागत गेलो, मिस्टर मिसेस नवरा बायको। आम्ही त्यांना सांगितलं गुरुजी मला एक मुलगा हवा है। गुरुजी ने बोला अच्छा चाहिए क्या, कौन चाहेगा बुरा, अच्छा ही चाहिए। तो गुरुजी ने कुछ तो उनको कहा, मालूम नहीं क्या कहा, और उनको संतति पुत्र प्राप्ति हो गई। इतना मिरेकल है। क्या बताया, क्यों बताया, ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये हकीकत है। इसमें एक भी शब्द झूठा नहीं है, गलत नहीं है। फिर 1.5-2 साल हो गए, फिर दोनों के मन में अभिलाषा हो गई, पति पत्नी के, अभी लड़की चाहिए। ते कुऱ्हाडीची गोष्ट असते ना, लोखंडाची मिळाली, चांदीची पाहिजे, सोन्याची पाहिजे, वैसे उनकी अभिलाषा बढ़ती गई। फिर आ गए गुरुजी के पास। गुरुजी देखने लगे उनके तरफ और पूछा अभी क्या है, नहीं अभी लड़की चाहिए, लड़की चाहिए। वो लिखा है उन्होंने, गुरुजी भी हंसने लगे। और फिर उन्होंने लिखा है कान मंत्र दिला, काय दिला त्यांनाच माहिती, और उनको कन्या रत्न प्राप्त हुआ। यानी ये सुनकर और अब यानी दादांत अनुभव है ये पढ़कर भी। अभी ये तो बहुत पुराना अनुभव है उनका। ये उल्लासनगर शाखा में उस वक्त मैं जाता था बीच बीच में, तो यह अनुभव यानी किस तरह तक, किस हद तक शास्त्र पहुंच सकता है। और गुरुजी ने कुछ नुस्खे दिए होंगे, लेकिन जो सुबह भी किसी ने तो एक बात छेड़ी थी, बिलीफ सिस्टम और रिलीफ सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब आपकी बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट होती है तो रिलीफ सिस्टम एक्टिवेट होती है। बिना बिलीफ देयर इज नो रिलीफ, ये ध्यान में रखो। पूर्ण श्रद्धा शास्त्र और परम पूज्य गुरुजी के ऊपर थी, और यह चमत्कार उनके जीवन में उन्होंने देखा। तो यह उनका अनुभव था। दूसरा एक अनुभव मैं बताता हूँ। काय आलं का तुमचं? रेडिओ म्हणतात म्हणजे थांबा तुम्ही। दूसरा एक अनुभव है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पहले नाम बताया था क्योंकि यह एक आध्यात्मिक बड़ी संस्था है जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। और जो व्यक्ति जुड़े हैं वो आध्यात्मिक उस संस्था से जुड़े हुए हैं, एकदम स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, अभी भी है। हमारे
सूर्य जी के सबके अभी भी उनसे बातचीत होती रहती है। उनको भगत जी कहते हैं। तो भगत जी अपना डोंबिवली में 12वां तपोपूर्ति सोहळा था और वह सर्वे सभागृह में हमने आयोजित किया था और अपनी संस्था की तरफ से वह वहाँ आए थे और उन्होंने सूर्य जी का डेमोन्स्ट्रेशन हमारा ये वो सब सुना, अनुभव कथन सुना, इतने प्रभावित हो गए तो हमारे पास आए डोंबिवली में, कुलकर्णी जी ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ भी वो कोर्स चालू करो। आपको क्या ज़रूरत है, आप तो बिल्कुल यम नियम आसन सब बढ़िया कर रहे हैं। नहीं फिर भी मुझे करना है, त्रैमासिक कोर्स करो। ठीक है, त्रैमासिक कोर्स उनके यहाँ हमने किया सुबह 5 से 7 बजे तक, उनका टाइमिंग भी ऐसा ही था। वो होने के बाद मुझे सूर्य जी से मिलना है करके उन्होंने बोला ठीक है मैं लेकर जाऊंगा। नहीं लेकिन मेरी एक बड़ी उसमें शिकायत ये काय म्हणतात त्याला अडचण आहे, प्रॉब्लम क्या है, हम लोकल से गए, सामने स्त्री दिखाई दी तो हमारे इसमें वो पाप है। अच्छा फिर क्या करोगे? नहीं, स्त्री का दर्शन हुआ तो उस दिन हमें उपवास करना पड़ता है। भाई फिर 12 उपवास के लिए तैयार रहो, क्योंकि 12 बार आपको लोकल से जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो 12 दिन का तो उपवास आपका पक्का है। दूसरी एक चीज़, अगर ये सतरंजी डाली है, यहाँ एक स्त्री बैठी है तो उसी सतरंजी के किनारे वो नहीं बैठ सकते हैं। गलती से बैठे, कितने नियम देखो उनके, गलती से उधर बैठे फिर उपवास, घूम फिर कर वो उपवास पर आते थे। और उनकी शिकायत थी, वो 19-20 साल के थे। देखो नेचर तो अपना काम करेगा, चाहे आप संसार में हो, स्पिरिचुअल फील्ड में हो, योग के क्षेत्र में हो, प्रकृति अपना काम करती है। तो उनकी शिकायत ये थी कि उनको नाइट फॉल होते थे, यंग एज एकदम, और उनके वही फिर नियम ऐसा कुछ हो गया तो फिर उपवास, और उनको उस इसकी नाइट फॉल की इतनी शर्म आती थी कि आई एम वर्किंग इन स्पिरिचुअल फील्ड, मैं इतना आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, भाई ये मेरे पीछे क्या पड़ा है। और उसके ऊपर उनके पास कोई रेमेडी नहीं थी और उसी कारण वो कुटीर में आए, सूर्य जी से बातचीत की और हम फिर सूर्य जी ने बोला की सर यांना प्राणायामाला घ्या। म्हणलं ठीक है, आता सूर्यजीने सांगितलं प्राणायामाला घ्या। प्राणायाम करने के लिए कहा, फिर मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ, वो डोंबिवली में आऊँगा मैं वहाँ, और सुबह जल्दी आऊँगा, आपका क्लास शुरू होने से पहले मेरा क्लास ख़त्म करो, वगैरह वगैरह सब नियम। ठीक है भाई आ जाओ। और उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास पूर्ण किया, एकदम मास्टर है, अभी भी योग करते हैं, इतना रिस्पेक्ट है कुटीर के प्रति, गुरुजी और सूर्य जी के प्रति बहुत वो रिस्पेक्ट से बात करते, और उनका वो प्रॉब्लम पूरा ही बंद हो गया। तो इसमें देखो जो एब्डोमिनल एक्टिविटीज़ हैं वह सभी जो है अपना मल मूत्र वीर्य ये और नीचे वाले जो भी ऑर्गन्स के, अभी हम तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में ही बात कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में, वह अपान के ऊपर निर्भर है। जिसका अपान के ऊपर कंट्रोल है उसका ये सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है। और प्राणायाम में वही कर रहे हैं हम, प्राण अपान योरैक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धोपि सततम मूलबंधना। यानी यह ट्रिक जो थी अपान के ऊपर उनका विजय पाने की, तो उनका वह प्रॉब्लम था वो समूल नष्ट हो गया। एक ध्यान में रखो, हमें तो रिजल्ट दिखता है, कारण हम क्या कार्य कारण भाव के पीछे हम नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो यह बात बिल्कुल ध्यान में आती है। अभी भी डॉक्टर से ही भी बैठकर मैं बात कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इसके लिए मैंने कहा उनके बाजू में बैठकर आई एम द मोस्ट बेनिफिशियल पर्सन। यानी जो एनर्जी निर्माण होती है शरीर में, हर एक के शरीर में है,
वह एनर्जी जो हम आत्मिक एनर्जी कहो, स्पिरिचुअल एनर्जी कहो, वह पुर्जे पुर्जे तक सही ढंग से पहुंचाने का काम योग करता है। ये एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, ये एनर्जी ऑलरेडी अपने पास बहुत है, और वह पानी, हवा, अन्न, सूर्य प्रकाश और अपने जो हम त्रैमासिक साधना करते, प्राणायाम की साधना करते, उससे वह एनर्जी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन सही जगह तक वह एनर्जी पहुंचना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसमें जो ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें हैं, वह हमारा कोर्स पूर्ण करता है। त्रैमासिक हो, प्राणायाम हो, आसन हो, बंद हो, मुद्रा हो, और हम कहते हैं कि अभी मुझे अच्छा लगने लगा। तो ये दो अनुभव मुझे बताने की जो अनुमति दी, उसके लिए मैं धन्यवाद। ताई म्हणतात हे दोन्ही विरुद्ध अनुभव आहेत, खूप छान वाटले। एक संतति प्राप्ति के लिए और एक बिंदु रक्षा के लिए, है ना, दोनों भी हस्तात। यानी अपना मार्ग जो है दोनों ही भी इसके ऊपर ट्रीट हो सकता है। धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद सुनील कुलकर्णी सर। अभ्यासपूर्ण लेक्चर सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए धन्यवाद। और बिना बिलीफ देयर इज़ नो रिलीफ, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया। अभी मैं निवेदन करता हूँ सुरवे सर को कि सुनील कुलकर्णी सर का सत्कार वो करें। हाँ, सुरवे सर। धन्यवाद कुलकर्णी सर। अभी हम हीरल मेहता की ऑडियो वीडियो क्लिप देखेंगे। Hariom. Respected dignitaries and my entire SAYK family, I thank you for this beautiful opportunity to present my paper on yoga as the complementary, holistic, and integrative medicine of infertility. Now let's go through the objectives of this paper. The objective of this paper is to identify and explain the therapeutic ways of yoga action on male reproductive health, to highlight yoga in a view of its impact on sperm motility in men, to illustrate and analyze how yoga can improve assisted reproductive technology outcomes in couples with infertility, to consider yoga in warding off prostate disorders and reducing the size of prostate if it has got enlarged. Let's begin in the next slide. Why aren't we talking about more male infertility? Why aren't more men aware of their infertility status? The famous endocrinologist, Amy, stated that 1 in 10 people need fertility help. About 9% of men and about 11% of women of reproductive age in the United States have experienced fertility problems. What WHO has to say about it? It states that infertility in general population is 15 to 20%, and the male fertility factor contributes to 20 to 40%. Moreover, the prevalence of male infertility in India is around 23%. However, many are untapped because they are ignorant. A recent survey which was done by WHO, in which 1,000 men over the age of 18 found that almost half of the respondents declared they were either unaware of or unconcerned
with their fertility health. Gender stereotypes. Males believe there cannot be anything wrong with them. It's a woman who conceive, and that's why this infertility problem can only happen to women. Historically, infertility has been thought of as a primarily female issue outside medical circles. This may be because women are more likely to discuss their fertility struggles or more willing to dig deeper into the causes of those struggles. Lastly, the stigma around male infertility in this patriarchal society is bigger than even acceptance level of having psychology or physiological issues a couple may find it. It can be due to several reasons. Also, the present literature reveals that the increasing trend of male infertility is also due to various other reasons of society, lifestyle, hormonal changes, and so on. So let's see what are the different common reproductive health concerns for men. Erectile dysfunction, as the picture at the right rightly describes, premature ejaculation, loss of libido, testicular cancer, and prostate disease. These are the common reproductive health concerns for men. Let's get into the details to understand what are the parameters that we should examine for the cause of male infertility. So next slide, we will understand the 4 parameters: volume of the ejaculate, concentration of the sperm, motility of the sperm, and the shape of the sperm. The doctors of All India Institute of Medical Science have reported that over 12 to 18 million couples in India are diagnosed with infertility every year. They have reported that while the sperm count of a normal Indian adult male used to be 60 million per milliliter 3 decades ago, and it now stands at around 20 million. It's a huge difference, right? So the reasons could be undescended testicles, diabetes, previous infections like mumps, enlarged veins in the testicles, which is called as varicocele, medications, hormonal changes, blockages in the duct tubes that sperm swim through, lifestyle factors. Let's dig in more to understand about the subject. The next slide, we are going to understand the types of male infertility treatment. Those are commonly known as oligospermia, azoospermia, extensospermia. Oligospermia is where the sperm count is low. Azoospermia, where there's no sperm count. And extensospermia is slow sperm motility. Before going into detail, let's understand the anatomy. Now, in the diagram on the right, you could see the red line, okay? So the testes basically produces sperm in germinal epithelium. This sperm that enters the epidermis. From epidermis, the sperm travels through the vas, and the vas carries the sperm into the structural called as seminal vesicle, from where the ejaculatory ducts will ejaculate the sperms into semen when the discharge is going to happen. So this is actually the journey it maneuvers through. You can see in the diagram very clearly stating how the normal sperm count are. When the sperm count are low, how it is seen. How is azoospermia different from oligospermia? And when oligospermia and extensospermia together get into, and it can lead to oligoextensospermia. Let's move into the details of oligospermia in next slide.
Oligospermia, it's when there is a low sperm count. Now, this low sperm count, you can see in the diagram, it is less than the half when it is not normal. It can be due to varicocele. Okay, the varicocele is that an increase in blood flow to the testicles and can be caused by enlarged veins in the scrotum. It could be due to infection, problems with ejaculation due to injuries, tumors, cancers, past surgeries, medications. It can be hormonal issues. It can be due to exposition to the metals and chemicals. It also can be leading to overheating of the testicles when they become too hot, especially when you place your laptop on your genitals, wearing tight clothes. Temporary rise in temperature around your testicles could reduce sperm production. Use of drugs and alcohol, obesity. So if you're overweight, then it can reduce the amount of sperm you can produce. So hormone production may be affected by the weight problems. Now let's understand what is azoospermia in the next slide. Azoospermia basically means that your semen is okay, but your semen has no sperms in them. So let's look into it. The next slide, azoospermia. If you understand what sperms are, you will understand that sperms are those life-living things or living beings inside your semen, which go into your wife or your partner and will go up to the egg, fertilize the egg, and form the babies. Now, this sperm are formed into testes, in your testes. And if this sperm are not able to reach your semen in any way, then you end up with the blank shots. In medical terms, it is blank shots. And how it is blank shots? That when you are having sex with your partner, you are just putting a lot of white liquid or semen into her vagina. But those semen holds no fertility potential. Now, this can be due to two reasons. And these are the two conditions. One condition is when your testes is not forming sperm. There's some problem in your body because of which no sperm are formed, and you're definitely going to have nothing in your semen. And this is called non-obstructive azoospermia or secretory azoospermia. Testes not producing any sperm. While the other one is obstructive azoospermia, which means that testes are healthy. You are a healthy man. Your best years are producing large amount of sperms, millions and millions of sperms, and these sperm are not able to reach your semen. Now, the semen is formed in the prostate as a sperm are found in the testes. So, the prostators in the prostate are connected by a tube called rest of us, and it is this tube which has a obstruction, and thus it doesn't allow to reach the semen. And now it can be due to genetic disorder, it can be due to mumps, it can be due to chemotherapy, trauma. There are various reasons for this blockage. Now let's look into asthensospermia. Asthensospermia is called as low sperm motility. Now, what is low sperm motility? The picture diagrammatic representation very clearly displays that in one, it actually enters very well and get close to the egg, while in the other one, it just dwindles around and it doesn't reach its ultimate goal. So there are various grades, as you see, the blue, orange, and red one. The blue ones is the grade one where it reaches the vagina and it reaches the egg. However, in grade B and C, it doesn't reach its proper place. So it doesn't have the strength to actually hit the egg. Let's look into various ways yoga can impact reproductive health of men. So next slide, we will understand different yoga like Hatha Yoga, Kripalu Yoga, and Couples Yoga. Hatha Yoga, it includes slow, methodical postures and movements.
And it focuses on improving postures and relaxation breathing techniques, and it is meditative in nature as well. Well, Kripala Yoga, it improves the connected between mind and body through simple postures and deep breathing techniques. The most common and most in vogue is couples yoga, and it is in vogue for right reason, because this type of yoga is especially beneficial for individuals experiencing fertility problems, as it helps to improve intimacy and communication between couples. They help each other in completing the postures, and thus it can be very beneficial when both parties together work out. The next slide, we will understand the diagnosis and consideration. As you know, in this 21st century, anxiety and stress are the most important element to deal with. The movement in poses can be used to discharge and direct energy, starting with energizing and ending with calming poses. So, focusing attention on present movement sensation could help avoid stress, anxiety. The next one is abnormal mood functioning and obesity. So, one should start with slow and easy movements with progressive increase in activity level. Then deeper twist, new poses, longer holds in poses should be encouraged to increase the capacity to go beyond your self-perceived limits. Low sperm count or motility disorders. Now, it this to combat with this, we need to get a blood pumping to the reproductive organs. And there are various poses which we will see in future slides. The other one is disorder in prostate. The best example is boat pose. It tones the pelvic floor muscles to promote prostate health. Not all type of male infertility are preventable. However, some common conditions of infertility can be controlled by following a few preventable measures, such as smoking, alcohol, illicit drugs, weight management, therapy for stress reduction, avoid exposure to the toxins, pesticides, heavy metals, and anything that leads to prolonged heat for the testicles. Now let's move on to the next 8 yoga exercise to increase sperm count. The first one being the most important for erectile dysfunction and to increase the sperm motility and the count. How it helps? It helps to increase blood flow to genital parts. The first asana is Baddha Konasana, and which we often do it in our kutir. Then it helps to increase the blood flow towards genitals, as I mentioned before. The next one is Bhujangasana. Again, very famous even in Surya Namaskar. So it helps to resolve premature ejaculation, while there are various other benefits as well. The third one is Naukasana, or also called as boat pose. And this corrects your erectile dysfunction by promoting blood circulation to the pelvic areas and enhancing your genitals. The most famous, the queen of all asanas, Halasana. So it increases sperm quality and clears the tract of flow, boosts male fertility. The fifth one is Sarvangasana. Again, it is considered one of the best poses, wherein it stimulates thyroid gland, which is helpful for a normal fertile condition. The next one is Setu Bandh Asana. It is also called as Kegel's exercise because it is named after Arnold Kegel, an American gynecologist. It strengthens the reproductive organ, male infertility, it increases sperm counts. The next one is Ashwini Mudra, the contraction and relaxation of pelvic muscles. So this all actually
increases the sperm count rapidly, and thus it helps increase the motility. Last but not least, pranayama relieves the tension, regulates hormones correctly, and thus relieves depression. You will be more fresh and will be more agile. Now let's look at the different postures for prostate enlargement. The Cobra pose, Baddha we already spoke about. The next one is Dhanurasana. It strengthens your pelvic floor muscles and your abdominal muscles. The hero pose or Virasana, it lowers the pelvic tension. Next slide. And other one is the reclining hand to big toe pose, Supta Pad Angushthasana. Now, the raised leg pose, it stimulates the blood flow to the reproductive organ and gives them a boost. It is especially beneficial in the case of erectile dysfunction, which is a major fertility problem in the males. The head to knee pose, Janu Shirasana, and the shoulder stand, Viprit Karni Mudra. Other few postures which are very evidently helpful, we will see in the next slide. The next one is practicing Shalbhasan, and it benefits the bladder and prostate gland. Practicing Samanhastanaukasana, it reduces prostate enlargement. Here I would like to give you one instance of the real life of my father. So while we were getting his medical, the initial stage when he was 62, we got to know that his premium level is more. And we tried to understand why it is more, while they declared that he has enlarged prostate. So we started focusing on therapeutic ways to combat that. For 1.5 years, he practiced regularly Shalbhasan. So every day he used to do Shalbhasan for 5 to 10 times and holding it for 30 to 90 seconds, slowly and gradually moving on a higher level. And after 1.5 years, when we again did his reporting or the test, it was noticed that the premium has reduced, and we were wondering how, because we thought he still have an enlarged prostate, which has a higher premium to be paid for the medical. However, due to these two postures, Samanahastanaukasana and Shalbhasan, which he regularly did, this is a real life case example where it proves that he was actually having a normal prostate and the enlargement was totally vanished. The another practice which Nikam Guruji often used to consider in his yoga posture was Agnisar. So you see in this video, Agnisar, it is movement of belly, and this increases sperm count and boosts sperm motility. Now, these are the few postures that helps fertility, and all the problems can be solved with regular practice, habit, and a proper disciplined lifestyle. Make a habit of switching off your internets, keeping your phone in a flight mode so that the couples can peacefully cuddle together and get a nice sleep. In the next slide, I have given the references of all my research material. I hope this session was fruitful. Thank you once again for hearing me out. Hari Om and thank you. We should thank Hiral for a very knowledgeable, emphatic, and good presentation. श्रीयुत सुरेश खटाव सर, जो ऑस्ट्रेलिया शाखा के प्रमुख है, वह हमारे बीच मौजूद है। मैं अभी सुरेश खटाव सर को सम्मानित करने को अनुरोध करता हूँ।
थैंक यू सर। అంటే సేఫ్టీనా? अभी मैं एक मिनट कन्क्लुडिंग सेशन आणि त्यांचा सत्कार संपला विषय। अभी मैं अटले सर को इस सत्र का समापन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अटले सर। नमस्कार। सवेरे से हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, केस स्टडीज सुने। मुझे ये सब सुनकर ऐसा लगा कि हमारा शरीर एक अद्भुत रचना है। हमारे सारे अवयव, सारी संस्थाएं, ध्यान से सुनिए, हमारे सारे अवयव, सारी संस्थाएं, जैसे पचन संस्था है, मस्तिष्क है, प्रजनन संस्था है, एक दूसरे से संपर्क बनाकर कोऑर्डिनेटेड, सुसूत्रता से काम करते हैं। उदाहरण बहुत दे सकता हूं, समय कम है। और उनके संपर्क का साधन है हमारे शरीर में जो है अनगिनत नस नाड़ियाँ, और उनके द्वारा या ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीट होते हैं वो हार्मोन्स। आपको पता है, गुरुजी पॉपुलरली कहते थे हमारे नाभि के आस कितनी हजार नाड़ियाँ हैं? 72,000 नाड़ियाँ। नाड़ियाँ मतलब क्या है? नाड़ियाँ मतलब नर्व्स। और इनमें से जो संदेश जाता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है, और हमारे नर्व्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते, उनमें अंतर रहता है। अगर जुड़े हुए होंगे तो कंटिन्यूअस उनमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और कंटिन्यूअस संदेश जाएगा। और जब संदेश यहाँ से यहाँ जाता है तो केमिकल के द्वारा वो यहाँ से यहाँ जाता है। इस तरीके का सिस्टम शरीर में बड़ी अद्भुत तरह से रचा है। लेकिन इसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो जब तक वो ब्लॉकेज क्लियर नहीं करता है तब तक उससे तकलीफ होती रहेगी। जैसे समझिए उस एंड में एक ऑर्गन है और मैं संदेश लेकर जा रहा हूं, बीच में अटका दिया मुझे, तो मैं अगर बीच में अटक जाता हूं तो मैं वहां वैसे ही बैठा नहीं रहूंगा, मेरा कुछ ना कुछ इफेक्ट आजू बाजू में होगा, और जो इफेक्ट होगा वो जो चाहिए वो नहीं होगा, जो नहीं चाहिए वो होगा। तो इस तरह समझ रहे हैं आप सब लोग? तो इस तरह से ये नस नाड़ियों के बीच में अगर अटकाव, ब्लॉकेज आता है तो अंतःस्रावों पर असर करता है, और इस कारण असंतुलन होकर बीमारियां होती है। तो सारी बीमारियों का जड़ जो है वो नस नाड़ियों का असंतुलन है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह बात जानी और असंतुलन दूर करने के लिए शुद्धि क्रियाएं और आसन दिए, क्रिया योग दिया। आप देखिए, जब आप पेट पर मालिश करते हैं तो ये नस नाड़ियों के जो पाथ है उनको आप हल्के से रगड़ के उनको क्लियर करते हैं। जब कोई आसन में हमें यहाँ दबाव आता है या यहाँ तनाव आता है तो यहाँ की नस नाड़ियाँ हेल्दी बनती है। जो बिना व्यायाम के कारण, बिना आसन करने के कारण अनहेल्दी है, वो हेल्दी बनती है। तो ऐसे ही नहीं कि ये थायराइड सडनली नॉर्मल हो जाता है। हम जब उसके लिए जो आवश्यक आसन करते हैं उससे वो नॉर्मल होता है। तो ये जान लीजिए कि शुद्धि क्रियाएं और आसनों के कारण जो असंतुलन है वो जाता है, और इसी कारण आपको अच्छा लगने लगता है। आज की परिषद में
हमने ऐसे कई कई उदाहरण देखे जिसमें केवल हमारा त्रैमासिक योग अभ्यास भी बहुत गंभीर व्याधियों को दूर करता है। बहुत उदाहरण थे, बहुत गंभीर व्याधियाँ, पीसीओडी वगैरह जैसी व्याधियाँ हैं, सब क्यों दूर हो जाती है? दूर होने का कारण एक ही है कि जो असंतुलन है वो हमने दूर किया। और किस कारण दूर हुआ? नॉर्मल योग प्रैक्टिस के कारण। इसीलिए शायद गुरुजी ने जो हमारा त्रैमासिक अभ्यास है उसको नाम दिया था स्वास्थ्य योग। उनको ये कॉन्फिडेंस था और हमको उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि हम लोग कहते हैं हमारा त्रैमासिक करो, आप ठीक हो जाएंगे। आज के वक्ता डॉक्टर साधना सामंतताई, डॉक्टर उल्का नातू गडाम, डॉक्टर ज्योति कॉन्ट्रैक्टर, डॉक्टर मनीषा सोनावले, हिरल मेहता और श्री कुलकर्णी जी ने तो दो अद्भुत उदाहरण दिखाए। एक में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हुआ और दूसरे में सीमेन पर कंट्रोल। ये सभी उदाहरण हमें ये बताते हैं कि योग एक शास्त्र है, कोई अंधविश्वास नहीं। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शास्त्र है। हम हर व्यक्ति अलग अलग है, इसलिए हम अगर निष्ठा से योगाभ्यास करते रहेंगे तो हर एक को अनुभव आएगा। लेकिन मेरा अनुभव और दूसरे का अनुभव, इसमें फर्क हो सकता है, लेकिन जो अनुभव आएगा वो अच्छा ही आएगा। इसलिए ऐसी परिषदों से हमें प्रेरणा लेकर योग करते रहना चाहिए। केवल करते रहना चाहिए नहीं, निष्ठा से करते रहना चाहिए। ऐसा हम कह सकते हैं, योग सीखो, योग करो। आप सब टीचर्स हैं, योग सिखाओ और योग का प्रसार करो। इस क्षेत्र में संशोधन करना बड़ी कठिन बात है, आपने देखा होगा। लेकिन जिन्होंने आज अपने अनुभव बताए, उनसे प्रेरणा लेकर संशोधन कार्य में भी हमें आगे बढ़ना है। हमारे कुटीर के डॉक्टर्स, शिक्षकों ने भी इस दिशा में प्रयास शुरू किया है और ये उस तरफ उठाया हुआ शायद पहला कदम है। ये मेरा कंसोलिडेटेड वृत्तांत था। अब मैं आगे जो शिल्पा ताई ने मुझे काम दिया है, हाँ, आपको अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेरीज भेज सकते हैं। हम उनको पढ़ के आपको रिप्लाई भेजेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ, सब लोग मुझे ही बोल रहे हैं आभार आपके, आप अब जाओ। हाँ, शॉर्ट में मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्थान परम पूज्य निकम गुरु जी को हम सब धन्यवाद पूर्वक प्रणाम करते हैं। प्रमुख अतिथि श्री किरण पंडित जी को बहुत बहुत आभार। वाईसीबी के मान्यवर डॉक्टर बसव रेड्डी जी को, जिन्होंने वीडियो के द्वारा हमें मार्गदर्शन किया, उनके मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया बैंच के संचालक खटाव जी आस्थापूर्वक उपस्थित रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विविध योग संस्थाओं ने हमें शुभेच्छा संदेश भेजे हैं, उनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। वो संस्थाएं हैं घंटाली मित्र मंडल और लोनावला योग इंस्टीट्यूट डॉक्टर घारोटे। कुटीर के सभी हितचिंतकों को जिन्होंने हमें आर्थिक सहयोग दिया है, हमारे बहुत बहुत हृदय से आभार। इनमें टीजेएसबी बैंक, एनकेजीएसबी बैंक और श्री अभिनव बिल्ड मैट, जो हमारे सामने ही उनका शोरूम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उपस्थित योग साधकों को नम्रतापूर्वक धन्यवाद देता हूं हमारी कुटीर के मुख्य ब्रांच की ओर से। और कुटीर के अनेक लोगों ने
तथा अन्य व्यवस्था जैसे भोजन व्यवस्था, वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, इंटरनेट पर जो कार्रवाइयाँ हैं, फॉर्म बनाना भेजना, ये सारी काम जिन्होंने किए, ऐसे सारे लोगों ने बड़ी निस्वार्थ भाव से ये सारे काम किए हैं। ऐसा योगदान दान करने वालों को हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभी मैं सुरभि जी से प्रार्थना करता हूँ कि शांति पाठ लें और उसके बाद हमारा कार्यक्रम हरिओम। समाप्त शांति होगा। पाठ के पहले और 5 मिनट लेता हूँ। हाँ, थोड़ा समय हो गया और 5 मिनट लेना देता हूँ डायरेक्टर कोटा से। हाँ, तो डॉक्टर आठले जी का सत्कार करने के लिए मैं कुलकर्णी जी को बोलता हूँ। या हे म्हणत होते 5 मिनटं, पण अहो किती कामं केली त्या लोकांनी। हां, हे आणा काहीतरी। हां, देतो ना। दुसरा एक आहे दिनेश रानडे। हे दिनेश रानडेने सगळ्यांची ओळख करून दिली। ते बँक ऑफ अमेरिकाचे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत। हां, बँक ऑफ अमेरिका। या दिनेश रानडे। आणि तिसरा जो आहे आणि रानडेताईंचे चिरंजीव आहेत, ते एवढे होते तेव्हापासून येत आहेत इकडे। हां, सुनील आणि लक्ष्मी सुतार हे आमचे मॅनेजर आहे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया। चला लवकर, अरे आम्हाला झोप नाही येणार ना, ते एवढं काम केलं। जरा घाई गर्दीत होत आहे, पण क्षमा करा। हां महाराज, तुम्ही अरे काय। लक्ष्मीताई या, सीमाताई या, मला उडी या, दे लक्ष्मी, पुढे पुढे। हां, हे घ्या, आहे ना, बसा। शिल्पा, सगळ्याचे सूत्रधार तुम्हाला जर कोण कॉन्टॅक्टमध्ये असेल, या वेबसाईटवर कोणाला संपर्क करायचा असेल, ते कोणाला करणार? शिल्पा मायदेव। माय गॉड। हां, आणि नको नको म्हणत होते। हां, पळून चालले होते, पण तुमचा नुसतं नको नको नाही, दम देऊन नको नको म्हणत होत्या। कारण काय आहे की किती मेहनत केली असेल तुम्ही अंदाज करा। एनरोलमेंटपासून दुसरा तो राम पण आहे। रामला एक फूल तरी द्या रे। आता जाताना सर्वांनी प्रसाद घेऊन द्या। बसा सर, बसा। जाताना सर्वांनी शांतीपाठ नंतर, आणि आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद। आपण पूर्ण दिवसभर इथे बसलात। नेहमी आम्ही खाली बसायला लावतो, पण या वेळेला खुर्च्या दिल्या, म्हटलं दिवसभर बसायचं आहे। हां, आणि आपला सहयोग मिळाला। थोड्या दिवसामध्ये का होईना पण एनरोलमेंट पूर्ण केलीत आणि याचा लाभ घेतलाच। पुन्हा एकदा सगळ्यांना धन्यवाद। आणि आजच्या अनुभवावरनं एक असा विचार आहे की हा सायंटिफिक स्टडी आम्ही प्रत्येक शाखांमधनं एक केस स्टडी कशा डेव्हलप करायचा, त्याच्या ही जी मंडळी आहे अकॅडमिकमधली, ती शास्त्रशुद्ध नोंदी कशा करायच्या आणि त्या प्रेझेंट कशा करायच्या वेगवेगळ्या झोनमध्ये, त्याचं आपण मार्गदर्शन वेगवेगळ्या विषयांवरून। आणि हे थोडीशी झलक झाली, केवढे अनुभव आहेत। मला वाटतं आपल्या शाखातनं आणि झोनमधनं जर बघितले तर किती अनुभव आहेत, आणि तेच अनुभव आपल्याला पुढे लोकांपर्यंत न्यायचे आहेत। आणि सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, हा जो ऋषींचा जो संदेश आहे तो पुरा करायचा। हां, पुन्हा एकदा सगळ्यांना धन्यवाद। ताई बोला शांतीपाठ। शांतीपाठ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम.